उस सर्कल के अंदर मौजूद हैं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए कहाँ पर सर्कल के हिसाब से टीम फोर थ्राइव्स खेल रही है। बट खैर वहीं पर कुछ और मजीद फाइट्स का सिलसिला आपको शुरू होता दिखाई देगा ख़वातीनो हज़रात, लेकिन एक एक फाइट, एक एक एलिमिनेशन निकालना, एक एक एलिमिनेशन पॉइंट अपना देना, हर ही चीज़ आज के दिन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। एंड फोरिया वो पहला नाम रहेगा जो इन सारी लॉबी में से रोंडो के मैच से ज़्यादा कुछ तोहफे नहीं निकाल कर लेकर जा पाएगा अपने लिए। सिर्फ 4 पॉइंट्स निकाले फोरिया ने, लेकिन वहीं पर गॉडल 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर ये टीम जा चुकी है पोर्टल। बिल्कुल, और टीम गॉडल ही ने वो नाम जो है इस मैच से एलिमिनेट किया। तो ये स्टार्ट जो है वो आप कह लें बड़ा अच्छा एक किया गया है टीम गॉडल की तरफ से। 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल करके टीम ओजी उनके पास भी 6 पॉइंट्स हैं, फोर थ्राइव्स उनके पास 7 पॉइंट्स हैं। तो ये भाईजान गॉडल ने 10 पॉइंट ले लिए 3 नामों की तरफ से की गई है। इसमें गेमिंग 10 एलिमिनेशन गॉडल वाले वो इंडियन इस मैच का कंफर्म करना है, और जो प्रेशर है वो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली प्लेयर्स के ऊपर के भी उन्होंने पॉइंट्स है वो हासिल करना है। लेकिन अरोरा गेमिंग आई थिंक बड़ा ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंडर प्रेशर कैसे खेला जाता है, कैसे डोमिनेट किया जाता है, और ये चीज़ आपको जो पॉइंट्स हैं वो बताते भी हैं इस टीम के कि दोनों जो दिन है, खासतौर पे वो जो हमारा कल का दिन था उसमें बहुत ही शानदार खेला टीम अरोरा गेमिंग ने। 8.5 पॉइंट्स पर मैच की जो एवरेज है एक लंबे दिन पर, जबकि आपने 8 मैचेस खेलना थे, वो टीम ने करके दिखाया। फिर उसके अलावा जो पहला दिन था वहां पर भी 9 पॉइंट्स पर मैच निकाले। तो मतलब जो एवरेज है वो बड़ी कंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट है टीम। लेकिन सर्कल वो शिफ्ट लेकर जा रहा है, टीम्स को रोटेट करना है, प्लेयर्स को हम स्पॉट कर रहे हैं कौन कहां पर है। लेकिन टीम फोर थ्राइव्स होके दे आर ऑन द वेस्टर्न साइड, सर्कल के अंदर अब टीम थोड़ा जाएगी और ऑन द मूव थे। जैसे उनको पता था कि सर्कल ने शिफ्ट लेना है, लेकिन जैसे सर्कल में टीम एंटर होती है हमें नेक्स्ट जो डिसीजन है, नेक्स्ट जो टीम का मूव है वो जानना है कि किस जगह पर रुक कर इस मैच को मजीद खेला जाएगा प्लेस के एंड से। लेकिन अगर आप जोन के बाहर देखें, ईडा स्पोर्ट्स वो हेमे टाउन से जोन के अंदर आ रहे हैं। टीम गॉडल है जो कि अभी जोन के अंदर आना चाह रही है, और एक थोड़ी लंबी रोटेशन है जहां पर ब्रिज साइड से आई थिंक प्लेयर्स आपको कनेक्टिविटी लेकर जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। वो जो रूट नेटवर्क है पानी के ऊपर से वहां से आते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ टीम ई अरीना जो टेबल टॉपर्स हैं सो फार, डे 2 तक के डोमिनेटर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा दूर दिखाई दे रहे थे वेस्टर्न साइड पर, सो उनको भी सर्कल में आना है। तो ये जो लंबी रोटेशंस हैं, ये जो लेट रोटेशंस हैं आज के इस दिन के लिए, इस पहले ही मैच के लिए कितना क्रूशियल है, कितना ज़्यादा ये हेल्प आउट आपको करने वाली हैं, ये तो अब हमारे सामने जब वो मोमेंट्स आएंगे एंड सर्कल्स के तभी पता लग पाएगा। लेकिन बिलाकर टीम अरोरा गेमिंग, जिनको कुछ देर पहले हमने कोई भी पॉइंट हासिल नहीं करते हुए देखा था, वो इस मैच का अपना पहला पॉइंट हासिल कर चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, एंड अरोरा वो ज़्यादा ओवर कमिटमेंट इस मैच के अंदर दिखाना चाहते बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अरोरा ज़्यादा आई वुड से कि एलिमिनेशन फील्ड के अंदर भी हमने उनको आते देखा नहीं है। अंडर द रडार रहकर आपको कहीं ना कहीं अरोरा के खिलाड़ी खेलते दिखाई दे रहे हैं इस मैच में। एंड एक अच्छी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप बच कर रहे अभी फ़िलहाल के लिए इस लॉबी के मूड से, क्योंकि लॉबी बाकी बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है। हर ही कोई मारने और एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाने के मूड में है, हर ही कोई एग्रेसिव खेलना चाहता है। अब गॉडल को देख लीजिए, उन्होंने 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए इकट्ठा कर लिए हैं। फोर थ्राइव्स को देख लीजिए, वो एक कमबैक करने पर #7 पर रहकर 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम फोर थ्राइव्स अपने लिए इकट्ठा कर चुकी है। एंड इसके अलावा अगर आप नीचे ओजी को देखें, उनके पास भी 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। सो अभी देखें कि जो हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रही हैं टीमें वो नीचे मौजूद हैं फिलहाल के लिए सारे ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर। लेकिन खैर गॉडल के 100 में उनको शायद रंगे हाथों पकड़ा गया है। ईडा वर्सेस गॉडल की एक फाइट आपको चलती दिखाई दे रही है, लेकिन एक सरप्राइज शायद पुल ऑफ किया जा सकता था विस्गॉड की साइड से। लेकिन विस्गॉड अगर अपना पोजीशन चेंज ना करते तो शायद ई अरीना के मॉर्मन हमें इस मैच से बाहर होते दिखाई दे सकते थे। बट लेट्स सी, अब ई अरीना के लिए देखना जरूरी है कि अगर रिकॉल का ऑप्शन उनके प्लेयर्स के पास क्या मौजूद है भी या नहीं। लेकिन खैर ओजी वो शायद इस तरह से फाइट नहीं लेना चाहते हैं, वापस फॉल बैक कर लिया जा चुका है उनकी साइड से कॉम्पाउंड्स की जानिब। एकेओपी उनका पोजीशन थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन एक खिलाड़ी ओजी के काफी पीछे उस दूर रिज के ऊपर भी मौजूद है। लेट्स सी कि ई अरीना और ओजी की इस फाइट में कौन सी टीम हमें इस मैच में बाहर होती दिखाई देगी। लेकिन खैर अभी के लिए ई अरीना शायद फॉल बैक करती आपको दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, और टीम ई अरीना जो अगेन अपने लिए पॉइंट्स है वो तो निकालना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस टीम को अपने आप को बचा कर भी रखना है। उनको अंदाज़ा है कि इनको अगर किसी टीम को पता लग गया कि टीम ई अरीना हमारे सामने है, हमारे बिल्कुल साथ मौजूद है, तो फिर इस टीम की खैर नहीं। लेकिन सर्कल वो शिफ्ट लेकर जाएगा, और वही एरिया जहाँ पर टीम अल उला के प्लेयर्स हैं, जहाँ पर टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स है, जहाँ टीम फोर थ्राइव्स है, और मोस्ट लाइकली आपको जो कवर का एरिया है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। सो इसी एंड पर हमारा नेक्स्ट सर्कल होगा, हमारा जो एंड सर्कल है प्रोबेबली वो
भी आपको यहीं पर इख्तिताम पजीर होता हुआ दिखाई देने वाला है, लेकिन वाइटैलिटी उनके एक्सेल बिल्कुल सामने मौजूद और लगा ऐसा कुछ देर के लिए कि शायद खिलाड़ी यहां से नॉकआउट हो जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं गिरे बट दूसरों को जरूर गिराएंगे। एक्सेल विद दैट फर्स्ट नॉक, दूसरे प्लेयर को नॉक करने के लिए बाहर निकले बट तभी ज़ोल उनको टेक डाउन करेंगे और टीम अरोरा गेमिंग अपने खिलाड़ी को भी एलिमिनेट नहीं होने देंगे। की जानिब से एक लोग एक्सट्रीम 4 की जानिब से नॉक फिनिश दिया जाएगा, हुज़ैफा की जानिब से भी एक और नॉक दिया जाएगा, आईयू की जानिब से भी दिया जाएगा भाई साहब। दिखाई देगी कंफर्मेशन दी जा रही है और आपको बैक टू बैक जो पॉइंट्स हैं जरूर आप होते हुए दिखाई देंगे। कैसे तूने कौन सी चलाई हुई है? इनफैक्ट एक ही प्लेयर मौजूद है, कहां पर है मैप में देखना पड़ेगा। आई थिंक खासा करीब है, बिल्कुल पास में आपको दिखाई दे जाती है टीम फोर्थ राइव्स के वो प्लेयर, लेकिन यही वो एरिया है। आए 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 40 है गाइस, गोडेल के 14 पॉइंट्स, उफ गोडेल के 14 और 40 के 11। हां ना इजी गाइस, बस ये 1 मिनट रुक जाओ, ये मेरा भी थोड़ा सा नीचे ही आ जाता है ऑप्शन। कह रहे इंग्लिश वाले कमेंट्री बंद कर दी इन्होंने, तेरे को आवाज ही नहीं आ रही कमेंट्री की। यार सीन है यार ये। E-Arena would be really bad to go out right now, and I can actually tell that E-Arena is playing fairly passive because they didn't take the opportunity, despite being ahead of OG, to hit Mghz hard. OG's actually been able to take up that position. अब तेरे पास यहीं पे चल रही है E-Arena, they want to live this game out. They are really giving a lot of teams liberties right now just to survive. One knock goes back over. No, it's not, but it is a little bit of a crowbar that's been dashed तेरे पास तो लाइव कितने है बता, slowing them down on their potential aggressive play. That was from 4 Fribes as well, by the way. 46 45 but they're currently sat on 11 elims themselves. And if they can vie for control 17 of the decent position off the back of this skirmish inside, hey, maybe 4 Fribes are coming alive early. What's great for Fourth Rise, right? In PMGO Season 1, they were top of the back seat because they came in with Smash Point very early on the first day. And I think that pressure got to them a little bit. It went all the way to match 6. They weren't able to put a lot of points, but they managed to make it through. The Arena, though, sending over. Joker does need to reinforce those backlines. ये कुछ साइड से कर दिया, ज़फर है बहुत ही प्यारा। At distance, Manya up to the rock, but realizes he's got to push back off this one. Tony K, full broadside here. Manya should be able to pick up this. ओए किल उठा लिया दलील के बच्चे ने। Now just S power, a lot to do, but this is the man to do it. He's the clutch factor. Oh, ये grenade हुई। it's so low. Able to keep his head above water for a few more seconds. Good bounce back. Squad Oh my God. bounces over, shuts down S-Power. Salme out. Adamino, the only one left now. Nice. That deployable cover barely keeping him alive. ये वालों ने भाई दवाई डाल दी है गोडेल पे। Players up still for E-Arena, looking to get further into this game. Admino might be able to go for the res if he goes for it now. I think they're going to sweep round in the vehicle, try and figure out what's going on back there. Grenading पे grenading भाई। Schweppes moves up, goes for the drive-by, has the information, and that is godlike. बहुत प्यारा है ये। A good refresh on the gear, at least for E-Arena. Some more nades बहुत ही available. प्यारा। More ammo. They could swing back down towards that compound on the south side they held earlier on, because this is a hard south shift away from Meyran. E-Arena getting thrown a bone here, but still they have S2G का बंदा एक players, दोन they से are गया not है। at full force. Let's see how they play this out. फिनिश किया। किल उठाने में So this कामयाब हुआ elongated एनगेज का battle बंदा। that's gone on the whole map here between S2G and Ulf continues, edge guarding them coming out of the blue and keeping shots on target. It's worked out slightly worse for Ulf, down to a duo, but we do say goodbye to Solk on S2G, so a triple threat remains there. There was some fighting over from non-shield onto सलमान OG एक बंदा क्रॉसबो चला रहा है आग वाली। pot shots at them, so a S2G का अलग two-man ये squad living अभी दिखा रहा on था। that. 4 Fribes consistently keeping their head on a swivel as well. They were Bye, peppering bullets over to the E-Arena encounter with Godlike. टीम Yes, 4 they got ट्राइब some का knocks, but और none of those converted एफएल का और to यूएलए का एंड एनएस का कहीं पूरा स्क्वाड है STG लाइव है। desperately trying to make the cross right now.
couple of shots, but the 40 के अलावा बस सारे जल्दी जल्दी मर जाओ यार. गया एसयूजी का वो बंदा बेचारा. गाड़ी फट गई इनकी. यूएलए वालों ने नहीं छोड़ा गाइस. अरोरा गई. अरे वेल हो गया सलमान, वेल हो गया. All those points have been dashed away. Still a 5-pointer on the game with the 3 players that बहुत प्यारा. They're on the other side to E-Arena. I like this though, actually. They've got Joker as well as Schweppes playing the northwest edge whilst Mormon holds down the compound. They're looking for exit frags here, Jackie. You see the conversations there between S2G. It's an intense day. Got to clear the bag instantly off the back of a game one like that. Mormon did set himself up just as you suspected early, and then have played a little bit more of a अभी ये देख वो कर रही है. ठंडा कर रहा टीम बनाएगा. Between the setup of 4-5s and OG. There's been a lot of noise, a lot of free info from that. Don't mind this too much. Just trying to create a little bit of a dip to play around as players will attempt to. अच्छा अगर ये ना हो ना ग्रेनेड करेंगे ना, ग्रेनेड से भी खड्डा बन जाएगा इसके अंदर जमीन में. बड़ा वो फायदा है. It's a gamble play, but they know they're close now. They know they're close. कल गाइस पिछले मैच में जो एनएस का चिकन देखने को मिलेगा वो भी किसी डिप बनाने की वजह से था. एनएस ने कल जो चिकन निकाला था राउंड में बहुत प्यारा चिकन था. ओजी वाले जो 40 वालों के करीब है, आईक्यू अपना एक अलग तरफ एंगल लेके बैठे हुए हैं. P24 एंड फ्लैक एक साथ है. हुजैफा थोड़ा सा साथ वाले घर में देखने को मिलेंगे. Plays up by the roadside. Not definite this ends in the urban. गोडेल ऑलरेडी हो गई है. 15 एलिमिनेशंस पॉइंट लेके गई है गोडेल. 15 एलिमिनेशंस पॉइंट. ओजी दिस गॉट नॉक. बहुत प्यारा आईक्यू. Fourth rise looking fantastic right now this game. 11 eliminations. Holding a strong 2-2 split. सामने निकमा गैलेक्सी मौजूद. यहाँ पर आईक्यू भी अच्छा ये है, ठीक है. Scouting towards Nongshim. ये की जाने. ये नॉक निकालने की कोशिश. With Nigma turning their attention onto Flash, you can see Schweppes had already identified their setup far over. He was waiting for an opportunity to actually shoot some bullets their way. That was the call for it. No raw connection from this. He'll spot Satan on the rotate with the vehicle as well. Still debating if he can actually get some pot shots here, trusting in his tools. याल्ला 40 को चिकन चाहिए. बोला 20 किल 25 किल जितने हो सके बोला. अभी हमें टीम फोर्थ राइट का 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ हमें जो है टॉप 7 पे देखने को मिलेगी. बहुत ही प्यारा यहाँ पर जो है मैच जारी है. जी हाँ, यूएलए क्लॉज को एफएल टॉप्स की जानिब से नॉक किया जाएगा. एनजीएक्स राउंड जोन से नॉक हो जाएंगे यहाँ पर. क्या यूएलए के प्लेयर अपने टीममेट को रिवाइव करवा पाएंगे या नहीं? बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि पीछे एफएल मौजूद है, सामने यूएलए वाले हैं. यूएलए के लिए मुश्किल है पीछे से. ओए ये वाला भाई साइड से एनजीएक्स वालों को ले गया. Getting some great damage just playing into that engagement between Alula as well as Flash there. Longer nades on this one though, Jackie. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 40 की लोकेशन अच्छी है. 40 की लोकेशन अच्छी है गाइस. आए ग्रेनेडिंग है भाई फुल टाइम एनजी सडन पे. क्या सडन यहाँ पे रिवाइव कर पाएगा अपने टीममेट को? फुल टाइम ग्रेनेडिंग आ रही है यहाँ पर ये की जानिब से. एफएल यूएलए 2 बंदे लेके एफएल के. नाइस. दोनों को फिनिश करवाया जाएगा. एक फिनिशर टॉप्स. Getting in towards 6th place, right? Very close at that point with 2 eliminations. 7 teams alive है guys. 21 total बंदे 7 teams के. Joker's going to try and get a different angle on this one. Move up over towards Mormon. Put some more emphasis over towards Mayran. We go a little bit further south here. The game actually does open up for E-Arena mainly. जी हाँ, फिर ज़्यूस भी हमें नॉक फिनिश होने को देखने को मिलेंगे. यहाँ 1v2 की फाइट है. वो ले गया भाई यूएलए. बहुत प्यारी स्पाना फेर रहा है. यूएलए 11 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ सबसे नीचे मौजूद.
There's been a lot of harassment of all of these squads from non-shin and 4-5s, consistently taking pot shots out, making the fight smaller. 4-5 अभी तक सबसे अच्छी लोकेशन में डुओ बन के बैठे हुए हैं गाइस, बहुत ही प्यारा। अरे नहीं उदैफा वनिश भी, उदैफा को कवर चाहिए। यहाँ पर एनएस का बंदा यहाँ पर कैंप लगा के घात लगा के बैठा हुआ उदैफा लोग की तरफ। एनएस वाले बेगैरती नहीं करना 40 के साथ। तो कहा थे दम में तो जाके फेस टू फेस फाइट लो, बेगैरती नहीं करना। यहाँ पर एनजीएक्स के दोनों प्लेयर्स अभी तक जो है घिस के अलाइव तो है, डिप बनाई जा चुकी है इनकी तरफ से। क्या यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे गाइस? ये वाले अभी भी एनजीएक्स के प्लेयर्स के ऊपर जो है घात लगा के बैठे हुए हैं। We're certainly looking to make it very, very difficult for any ओए of the ओए ओए team भाई ये वाले भाई यूएलए का एक नॉक देंगे। putting the worry on requiring teams to keep tabs on them, potentially even hunt them down to keep their tournament alive. Because as soon as they smash, the game's finished. There's no longer any more opportunity to rectify those mistakes from previous days. You will just be हमारे दो की जो है ना उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है 40 वालों ने। वो अगर किसी एक ग्रुप का बंदा नॉक होता है तो उसमें उधर डायरेक्ट घुस जा सकता है गाइस, इसलिए मैं एहतियात से। Showing that they're handy with the steal. And for Alula, try as they might to absorb points from this lobby. They're so Falak knock. T24. Falak finish. T2. Onto OG, but it took down a member amongst the commotion. What is that apply yaar? T24. T2. Like you say, a bit of an accidental play there, but not the one you want to see. Always praise Falak's gunplay. Basically a legend in close quarters, so to lose him in an urban finish, disastrous result here. Hyunbin though will find R3B. To send a nade over the top immediately to confirm. Is that in the window? I was going to say, that is a long lob on that one. By this time, it's a bit more difficult. Allah khair kare. थोड़ा मैच बस गया। ना फलक बहुत गलत हुआ है फलक के साथ। बस जो भी है ना विन करा दे हमें, बस विन चाहिए बस। बहुत ही गाइस मैच जो है वो यहाँ पे टाइट हो गया है यार। ये वाले यहाँ पर जो है जोन पकड़ेंगे, एनएस वाले तो भाई लेटे हुए हैं घरों पे। वो देखो एक दीवार के पीछे टीजी हरामी। उज़ैफा की जानिब से जो है ग्रेनेडिंग हो रही है ओजी वालों पे। ओजी वाले नेट पे ये वाले पुश करेंगे आईक्यू पे। जी हाँ, नॉक फिनिश दिया जाएगा उज़ैफा की जानिब से। बहुत ही हैवी आईक्यू की जानिब से फिनिश मॉली से। ये ग्रेनेड है तेरा। अरे 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 शहजादा, बहुत ही प्यारा। टीम फॉर थ्राइव्स, बहुत ही प्यारा गाइस। इंशाल्लाह बस एनएस का बेक खतरा है हमारे लिए और निकबा ग्लिच। अबे निकबा के फिर भी दो हैं, एनएस का है एक इशू बस। एनएस वालों को यही तो रोल है, एक दीवार के पीछे 3 छतों पे। ऐसे जलील के बच्चे हैं, वो देखो छतों पे चढ़े बैठे हैं आराम के पिल्ले। इनका कुछ करो, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। Does not have a position to play though. Everyone's completely looking his way. Might have been better to hedge his bets down towards Mghz and just try and take a one-on-one trade. नाइस अभी तक जो है अच्छी कोशिश जारी है। बस हमारे प्लेयर्स को जो है ना इस वक्त इन्होंने जोन बड़ा प्यारा लिया इस मैच में, बहुत ही प्यारा जोन कवर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। Honestly, for 4-5s, it's probably worked out in a way with that shot. अरे अरे आईक्यू, what a grenade आईक्यू। Oh yes, अल्हम्दुलिल्लाह। They're safe for now. बस That's what they needed. 4-5 तो 5 टीम्स जो है रह चुकी है गाइस। अरे 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 एनएस की जानिब से ओजी को नॉक। चिकन भी है, किल भी अपना इंशाल्लाह 20 किल हो जाएंगे। 13 हो गए हैं, 7 और चाहिए एलिमिनेशन यहाँ से। ओजी पे ग्रेनेडिंग बहुत ही प्यारी जा रही है यहाँ पर एनएस की जानिब से। For Nongchin Red Force is where all the storylines converge.
chicken dinner would be ideal, but a few more eliminations and a second ऊपर place नहीं चढ़ सकते, I would think get them इसके। in towards that position. A pitch battle between Nongshim Red Force. एनजी एक सडन जोन से जाएगा। शटर का T24 ने फिनिश किया। IQ नॉक। अरे IQ नॉक। IQ फिनिश। हुज़ैफा की जानिब से AK को नॉक किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रही है यहाँ पे टीम फोर्स राइव और ULA की जानिब से ULA फिनिश बन गई। हुज़ैफा बिस्कोट को ले गया। हमारे 2 प्लेयर अभी भी अलाइव है गाइस। एनएस का पूरा स्क्वाड है अभी भी। एनएस यहाँ पर इशू है हमारे लिए। बहुत ग्रेनेडिंग कर रहे हैं एनएस। टीम 4 ड्राइव पे पुश कर जा चुका है। 4v2 की फाइट। बस बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर फरमा। हमारे 2 शवादे हैं। ये देखिए डब्बों से जा रहे कीड़ाबाजी करने भाई। IQ देख के ना। ठीक है 50 HP ले जाएगा IQ। T24 सॉरी। ग्रेनेड जा रहे नहीं T24। हेल्थ। हुज़ैफा जोन से गया। ओह शिट। यहाँ पर गाइस हम जो आ रहे हैं ना, हमारे पास हमारी टीम नहीं लाइव थी बस, वरना बहुत अच्छा प्ले किया लोग। छत्ते भाई, छत्ते बाढ़ रखी थी फिर भी भाई। 4th राइव जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा गेम प्ले। आई थिंक 20 पॉइंट्स लेके गए या 19। 13 मैंने नोट तकरीबन 22 पॉइंट हो गए इसी मैच। एनएफ के किल नहीं थे इतने। एनएफ की किल ले 40 इंशाल्लाह। डिक्टेटर These guys must be so confident. They don't look अच्छा भाई साहब यार एनएफ का चिकन बड़ा प्यारा था। इन्होंने जो लोकेशन से बस यार ये देखना, ये घरों पे चढ़ के बैठे हुए हराम के पिल्ले। पीछे से ले गया ना वो, आ गया वो बेचारा। आगे हेल्थ भी करनी थी उसको, जोन पे जाना था। उसने लास्ट एलिमिनेशन पॉइंट भी ले लिया। जोन से मर जाता बहुत ठीक था, उनको फ्री का एलिमिनेशन पॉइंट मिल गया एनएस को। ये बड़ा देखो had some familiar faces. I think E-Arena panicked a little bit, but they just about made it right at the end there. Losing for lack for 4th rise was a fairly big deal, but OG also getting in towards a late game. Aru making some good calls that match. I think Mghz also was very resilient that game to get where they did from where they were playing, so difficult, and then Lord able to sneak his way in. Oh man, you were bigging up Lord earlier into the tournament, right? Saying it's the fact that you've got Coops and Lord. That sort of collective in unison that's doing so much for this team. And again, there, in a situation where it felt like you were out, Lord goes off with the solo shenanigans. Oh yeah. Hey, do you know what that is? He's got the Brandon on the go, mate. That is the stamp to get into the winners club. Nongshim fighting, we'll be back soon. Hi everyone, I'm Rick, producer of PUBG Mobile. For the past 8 years, PUBG Mobile has continued to grow together with players around the world. And even today, we are still fully committed to this battleground. We are continuing to invest more resources, improve the experience, and bring PUBG Mobile to more players in more ways. Today, I'm excited to share something important with you. New app, PUBG Mobile Lite. First, PUBG Mobile Lite is not about making a smaller game with a smaller experience. It's about maintaining the high-quality PUBG Mobile standard while giving players a lighter and more accessible way to play. We know that different players have different needs. Some players want the full PUBG Mobile experience with the richest content, all sorts of highest quality gameplays, and everything the game has to offer. For those players,
PUBG Mobile will continue to be the best choice, but some players want to jump into battle faster, save more storage, and reduce the burden on their devices. That is why we are creating PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite is a lighter version of PUBG Mobile, built for players who want a faster and more flexible way to enter the battleground. The initial download is only around 1 GB on Android and under 2 GB on iOS. There is no extra mandatory package before your first match. Once the download is complete, you can load in and get straight into the battleground. We also made PUBG Mobile Lite more flexible. You can choose which extra modules to download based on how you like to play. At the same time, PUBG Mobile Lite is still connected to the PUBG Mobile experience. The classic Erangel map, supplies, and core combat are designed to match PUBG Mobile, so the battle experience remains authentic and uncompromised. If you already have a PUBG Mobile account, you can log in with it on PUBG Mobile Lite. Your own items can carry over, so you can continue using the outfits you love. You can also team up with your friends on PUBG Mobile, so your squad can stay together with no social barrier. Going forward, PUBG Mobile Lite will stay updated alongside PUBG Mobile, so players can enjoy new content together. We are targeting an official launch PUBG Mobile Lite later this year. Please stay tuned for more updates, and you can pre-register in the store from August 25th. Whether you are discovering PUBG Mobile for the first time or returning to the battleground, we are excited to welcome you to PUBG Mobile Lite. Winner, winner, chicken dinner. See you on the battleground. We will see you on the battleground. PUBG Mobile Lite pre-register August 25th. I'm excited for it, Max. I know you'll probably end up making a video about it on your Instagram, which is what? Remind me again? Those Maxman Cast right now on Instagram. But no, I get comments, I'm not joking, Seven, every single day about PUBG Mobile Lite. When is it coming back? When is it going to get an update? It's getting an update later this year. Oh my goodness, the world is going to be loving some more PUBG Mobile action. 100%. I'm excited for it. Hopefully you guys are. But I'm excited for the match that we just had here, because E-Arena definitely able to cross that threshold for being in the smash zone. I mean, they truly analyzed the situation. They had every opportunity to get rid of NGX from that, I guess, southern side of zone, but no, they kind of already knew that they did enough to hit the threshold. And I mean, it was kind of all to Mormon's sort of intel on OG and For Thrives. They had quite a bit of line of sight on them, their position in zone, but incredibly calculated from them. But of course, we gotta talk about the tippity top For Thrives right now. We do gotta talk about For Thrives because we were expecting aggressiveness out of this team, and boy, did we get it. Boy, did we get it. For Thrives coming in hot today. This is exactly what I wanted to see from them. Did they slow down just slightly when I would have liked them to be a little bit more aggressive onto OG, onto some of those other teams, you know, as the zone started closing up around them? Yes, a little bit more mobile, just a little bit more aware. However, they bided their time. They were patient with what they did. When it came time to actually make those fights, they were able to just flip the switch, turn on that aggression, get those eliminations, and so many points. They are just flying off that leaderboard. This is why I said yesterday they still can do it. If they have a day like they just had in this rondo, if they continue doing that, they still can do it. Especially when you have a player like IQ, the IGL of this squad, putting up the numbers, performing for this squad and clutching up. But we also got to talk about Notch and Red Force because they were the winners of this match, Max, and they played that out perfectly. And I think they might have been able to also pass that threshold. Yeah, like of course GG For Thrives, but Nongshim Red Force doing so much parkour in the city, swiping every other team under the rug. And actually, they're trying to aim for 122. I believe they did make it. We'll check out the leaderboards very soon. But Nongshim Red Force giving E-Arena an absolute run for their money. And it is so rare to see two teams on the very first game enter the Smash Zone. It might have just happened today.
it might happen today. And something that might happen today is that we might see teams that might not be challenging for that first place, putting up great performances. And we saw that exactly out of Godlike. This squad came to play. This squad has absolutely nothing to lose, Lays, because they were going after elimination. Actually, before we even talk about Godlike, I want to see what the overall is looking like, where the teams are currently standing, how far away some of the other teams are from there. Noxian Red Force is actually in first place with 123 points. Now we have two teams that are able to win in the next match. Oh my goodness, by the way, E-Arena should also be colored, I'm pretty sure, because they are also in the Smash Zone. You just need to get above or tie 122 points. So if Noxian Red Force or E-Arena now, Lace, get a chicken dinner, that's it, tournament over, and we will be crowning our champions. I know, and it's so incredibly exciting because both of these teams, especially when it comes to those sort of placement points, look at Nongshim at 40 placement points, E-Arena with 34. They have every opportunity and drive to be able to secure that chicken dinner. Now, Seven, you asked me a little bit about Godlike, which I know was on the second page. And the reason we want to highlight that is because they were sort of sitting more under that middle threshold. But with 10 eliminations early game, another 4 as they sort of rotate in on that northeast side. And then S-Power recovering the team to bring them back in. But I want to give like a kind of a little special shout out to Admino having an absolute banger of a game too. I think it was about 7 eliminations just by themselves, and they were able to sort of scout and hold that, and just getting like that 15 elimination points on the board is insanity, especially from where they were sitting earlier today. But I want to check real quick the rankings. We did see for a quick second there. 11 points away for 4 Thrives now. Jumping around from the middle pack. 11 points away from top 3. The comeback is happening. This is what I keep saying. This is Four what I keep Thrives saying. comeback? Four Thrives comeback? Four Thrives comeback? Because this team, I actually got a chance to talk with for life. If you want to check that out, go to my Instagram at the 7WG. But we're now seeing the race to Smash. There you go. You see 4 Thrives, 23 points away, which this is a perfect start for that team, getting more than 15 eliminations, getting in the top 2, and now they are just 23 points away. And if we know anything for this squad, with the way that they're playing, with what we have seen out of them in PMGO Season 1 this year, they could make it in the next match, as long as one of the 2 teams at the top don't end up winning it. Well, exactly, yeah. So this is the case, this is the scenario where, you know, neither of those teams, Nongshim or E-Arena, they don't win next match. We do go into game 3. If 4 Thrives are allowed another good win, I say allowed because we don't want any hot dropping going on. They might get targeted, you never know. However, if they're allowed one more game, if we do go into game 3, 4 Thrives need another top 5. They need another several points, 8, 9 eliminations, there we go. Another few of those, and they are in Smash ruling. They are a contender, and they could just do a back-to-back global win. And I think we did end up getting today, Maxman. I think we might have gotten a Maxman grenade of the day. Oh, really? Did we now? It's time for your favorite segment of the day. It's Maxman's grenade of today. Let's check it out. Which play is going to be here? It's going to be in the city. This 4 Thrives. It's Falak over there looking for a KOP. He gets it done right away. The man is an absolute menace. But he's too much of a menace because T24 had to take him down. Oh! Give him a boom boom back to the lobby. It's Max grenade of the day. Sorry, some background music for you, Max. That was a great. We got the drums, we got the jingle too. But yeah, for that team, I mean, overall, it's a great start here for the final day of PMWC at EWC 26. A great performance out of those teams that we were expecting a good performance out of, right? We talked about already E-Arena having to do what they needed to do. Now Nongshim being able to show up when they needed to show up, starting off great here with the win as well. One thing that we do need to talk about is possibly this team's being targeted. When I say being targeted, I don't mean getting a hot drop right away, but we are going to be looking at those rotations, because if we look at E-Arena, E-Arena has 2 wins so far this PMWC in Erangel, and in the finals, E-Arena has already gotten 1 win in day 1, match 3 in Erangel. Actually, I do want to say, I was talking to Kalaris earlier. Nongshim Red Force, they got back-to-back wins, right, on the island finish. So that's going to be something that you got to keep into mind also, because they did win PMMI by Smash ruling. Literally, all of the storylines are merging together in favor of the South Korean team of Nongshim Red Force. They could be looking fantastic. But of course, that's if E-Arena get a win, or if Nongshim Red Force get a win. But Niptura, we got to keep in mind, it's not Rondo anymore. It's no Rico Tower anymore, meaning the teams that are not currently in the Smash Zone is going to be even more complicated for them to reach 122 points. Oh, absolutely. And then you've got, you know,
when we've seen this a lot of times in, you know, Smash Rolling last day, all of this sort of stuff, you do tend to see other teams actually go ahead and change their drop location to avoid getting targeted. But you're right, Seven, right? We are going to be looking at those rotations. We need Fourth Rise, we need Nongshim, we need E-Arena, we need Enigma Galaxy as well. All of those teams. Aurora did not have a good game at all, so they're still chasing that. They need to make sure their rotations are on point, that they might change them a little bit just to avoid any early eliminations, because right now, it is now or never. We got 2 teams in Smash Rolling. You do not want to take any chances going out earlier. You're gonna have to use those spidey senses if you're currently at the top. If you're Fourth Thrives, you want to continue your frag out. Here you go. You can actually have it back now. Thanks so much for letting me borrow. If you're some of the other teams, E-Arena, Nongshim, you gotta watch out for everything going on your way. And I know right now around the arena, we do have a special guest going by. Spider-Man is officially back in PUBG Mobile. Some of you may remember the collaboration in 2022, and this time he's returning to Erangel. Suit up and explore the brand new central square. You can move across rooftops, run across ceilings, and hunt down enemy squads. But it wouldn't be Spider-Man without the powers. So, you can grab Peter Parker's gloves and you can web swing your way around the city, or you can even use your webs in combat to slow down or trap your opponents. And of course, there's so much to discover beyond the fights. You can visit Peter Parker's apartment and hunt for hidden Easter eggs inspired by the world of Spider-Man. From Peter's messages, to secret clues, to hidden surprises that you're going to have to find yourselves. And remember your favorite Spider-Man movies? Well, here's your chance to recreate those iconic moments. Maybe you pull off a perfect rescue, maybe you escape a fight by swinging away at the last second, or maybe you and your squad just stop everything to take the perfect Spider-Man shot. So, if you haven't jumped in yet, grab your squad and experience Spider-Man in PUBG Mobile. Also, Spider-Man isn't only swinging around Erangel today. We have got Spider-Man on stage right here with us right now, and he didn't come empty-handed. He's going to be handing out PUBG Mobile merch in and amongst the arena, so make some noise for Spider-Man! It's good to see the heroes back in action on every single front, from Spider-Man to Hyunbin and the rest of Nongshim. Heroes is the name of the game today. These teams have been heroes in their own right. For Nongshim Red Force, what a push to hold down Meiran and find their way to that smash zone. E-Arena held their nerve. They played that west side well, and they just got across that line. It was surgical precision on that 122. Surgical is the perfect word, because Rondo did not disappoint. Yeah, we got Spider-Man here to save the day, but we got 2 massive threats in the lobby now. We've got E-Arena and Nongshim Red Force that can end the tournament right here, right now, with 1 single chicken dinner. That's all it's going to take. We saw Nongshim just do it. Can they pull it out the bag again? But it's not just those 2 teams. As the desk, as Blank and Jackie were saying before as well, there are other teams waiting in the wings, now staged with the points that they earned from that previous game, from that Rondo, to jump into the smash zone. There are probably at least 6 teams that can do it this match and join them. So if we don't get one of those smash chicken dinners, it is going to get hotter and hotter as the day goes on, because I don't think we're only going to see 2 teams
breaking that barrier today. Yeah, I'm glad we were able to get on the cast here for it to at least cast one game, right? Absolutely. This is absolutely insane here. My hopes and dreams are coming true. Could we see 6-7 teams in the Smash Zone with one single squad that could win it? That would be insane. At the same time, though, right? You gotta stop these two squads, because if E-Arena or Nongshim Red Force win right here, that's it. This tournament is over, and one of them is walking away with $500,000. Hey man, I caught Coach Pecco for Nigma Galaxy on the walk over to the caster booth just now, and he was saying, I asked him, hey, you gonna target? And he was like, if we know it's them, things might get a little bit nicer. Hey, you know, I can't say, but yeah, I feel like that is the sort of situation where teams who are certainly below those top two will really hard commit if they find one of these teams in a fight. The third-party targeting will definitely be high on the menu for a lot of these teams. It has to be. It really does. I got a chance to talk to Knight, as a matter of fact, the coach from Foryou, and because in Brazil, these guys have had so much practice when it comes to the Smash ruling. Foryou themselves have smashed in multiple of their regional tournaments. So I was talking to them. I was like, hey, exactly the same question, right? If you see a couple teams in the Smash Zone, will you guys go out of your way to take them out? And they said, well, at a certain point, we have to. You know what I'm saying? We know what's at stake. If we have to risk a bad game to ensure that we can continue in this tournament to possibly come back, we're gonna do it, right? So even if it's a crash and we lose the fight, we're taking a couple of those players with us. So the whole lobby, honestly, really needs to have that kind of same mentality, because if you want to be able to move up the leaderboards, there are massive jumps in prize pools as we go from 3rd, 4th, 5th place. So you want to be able to stay in this tournament as long as possible, and this one's going to be a fun one. We got a nice Eastern Circle. I don't know about nice. It's certainly an Eastern Circle, though. It's going to push all the way out towards Milta, east of it, and Milta Power. Lepovka's in there as well. A lot of water here, Jukes. So that is going to be tricky to navigate. Nigma Galaxy will not be getting hot drop currently, but Ulf might try and step in. Ida clashing with Tianba over on the western side. A very, very close drop. And of course, we got our big threat in the lobby on a bike. Finally finding a vehicle here. And they're going to go ahead and be looting all this north side of Georgeville Hospital area. And since it is such an Eastern Circle, right, I wonder how much these teams are going to be kind of even thinking about possibly a rotation camp. Things like that are going to start coming into play here. And yeah, man, this is going to get intense. Yeah, a lot of teams looking to put pressure on as the fight in near Gatka between Ida and Tianba is still popping off. Remember, this is an adjustment from Ida to move out this way with the plane path as south as it was. They are going to get stuck straight in with Tianba, and neither team is looking super happy about it. Aching on the inside of the building. Swain on the top floor now has Eagle to contend with as well. Drops a nade down to the ground floor. He tries to fend off the remaining two players. QZZ unlikely to get picked back up here. Does bleed out in the end. And a step forwards. Swain rebuffs. One more barrel, but it's not enough to blast it back. Tianba survived, but with only two players. And Horror can just move in and maybe just sweep this one through. A very strange hot drop coming through over on Gatka. Terrible. I mean, honestly, Ida's disrupted this lobby so much, and Tianba are devastated. Now down to just two single players. Aching jumps out, just desperate, trying to do something for his squad, and Eagle is just standing still, just saying, like, not like this. Not like this. Horror have been a little bit quieter during the course of these finals. Not the fans, that is, the players. The fans have been plenty loud, and we've loved it, but they haven't quite had the performance that we were maybe expecting from them coming into the games in these finals. It's not going to be enough. I don't see them catching up when we've already got two teams in that Smash zone. It is a bit unfortunate. It is not great, but they can look pretty good in game. Skins. Make sure you're heading into game to pick up the character sets, the Ninetales Fury Org, and you can look as good as anyone. जी हाँ यहाँ पर टीम EA जो सिटी में मौजूद लूट पार्ट हो रही है भाई यहाँ पर। Honestly, yeah, it seems like Aura, OG, they're gonna need to bust some of that out if they यहाँ want पर अभी तक हमें जो दो टीम्स जो डेड होने को देखने को मिल जाएगी INVE and they're gonna need a 20-point game here, a 20-point game in the next one, and maybe even another one after that. It's triple back-to-back. It's triple back-to-backs. You know what I'm saying? We still have enough games to do it. It's just gonna be tough, especially considering that you got
there's going to be quite a few teams in that smash zone very, very quickly here. That's if this game even continues on after this one. So a lot of different factors to play out. The problem also is the fact that we get later and later into this tournament, the desperation is going to raise tremendously, right? So these teams in the mid-pack are going to even start playing hyper-aggressive because they're going to know, right? Their coaches are going to tell them, hey, man, look, you made it all the way over here to Paris, all right? You either get 20 points or this was all for nothing at a certain point, right? Well, that's, I mean, there's still placements on the line and all of that sort of thing. I'm just looking at the map at the moment, and I'm seeing that Nongshim Red Force might be in with their first fight in a moment, which is going to enlighten the rest of the lobby as to sort of where they're playing, what sort of conflicts they could be running into. A 2-2 split across Milta right now for Nongshim, as they did not fully or firmly hold the bridge against Alula, so that crossing does come through. Hassan. And that central glut of Okay, teams जी, now, Daily they've Drift, got their shots. हाँ ठीक है, 40. नमी कैसे जानूँ? बिलाल भाई आप OGM में ही हो. 40 को दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता ना इसके अंदर. ये PUBG वाले खुद ही जो है वो स्पेक्टेट मोड चलाते हैं. 40 का मेरा भी तो दिल कर रहा है ना देखने को, नहीं दिखा रहे. क्योंकि अभी इनके ऊपर फाइट नहीं हो रही ना. ये टॉप की टीम इसलिए भी टॉप टीम्स को दिखाते हैं. इनका जो है असूल होता है टॉप 3 टीम्स को दिखाते हैं ज़्यादा. तो हमारी 40 जो अभी टॉप 6 पे है, दुआ करो अल्लाह पाक इस मैच को इनको चिकन दे कम से कम 12 से 13 किल्स के साथ और टॉप 3 टीम जो डेड हो जाए तो इंशाल्लाह ये टॉप 3 पे आ जाएगी. But they are in a really good spot for this circle for now. I mean, teams should be aware, right, of where they're playing based on the fact that it was Alula that they knocked, and Nongshim Red Force generally going to be in this sort of location. They'll know that Alula are coming up from Novo. So it should be a pretty certain bead on it for a lot of teams in the lobby, but nobody is likely to send out this way. Maybe a cause some problems. Vitality are actually holding the west bridge, which is interesting, over on that side of things. So if Aurora decide, you know what, we're not going to go over to that east side, we're going to try and break west, Vitality is still lying in wait for it, which I'm not too sure about. I don't know about that. Here as you got some pretty wild rotations here. Speaking of wild rotations, we got Mghz rocking their 2-2 split. The same again. Same again. You know, I actually talked to Ralph a little earlier this morning. Asked them like, hey, you're going to continue to do it? They're like, yeah, you know, it's worked for us in the past. ULA का एक बंदा मरा है ना जो वो मैच ही लीव कर गया, एक्सपेक्टेड भी नहीं कर रहा टीममेट्स को. Some pretty crazy pushes. मैच लीव मर जो गया, फिनिश होने के बाद लीव कर गया, एक्सपेक्टेड नहीं किया टीममेट को. अभी वो यूएलए की टीम के ऊपर ना वो था, एक्सपेक्टेड किया था PUBG वालों का, तो वो उसका क्रॉस हो गया था. लीव कर जाता ना बंदा. Yeah, exactly. We've come so far. But they're going to look for that regroup at some point. Getting through for that regroup is really the difficult part. But we've seen for Enigma Galaxy on this regroup rotation, getting through the glut of teams right now. I'm not too sure how that's going to work. They may have to go on the boat, maybe head up all the way north of the Popcorn and go all the way around. That would be, I mean, maybe not sensible, but possible, certainly. It's difficult, and they are going to get on the road right now to see what they can find. E-Arena are also starting their move in from South George. As we can see, we're on board of them, just passing the north side of school to head towards the center of this circle as it centers up on that Milta Hill near prison and mansion. Rotations are coming as we are zooming in to Erangel. What kind of circle we're going to get here? All right, just beautiful center. A lot of these teams are right? They are going to be on both sides of the circle. It's going to be very difficult for them to get to their teammates here, so we'll see how guys, but we still got some teams still trying to get in this zone. अबे विटालिटी को देख कहाँ पे? Over there in North George, Aura still in Severny. And you got Vitality going on the other bridge here, so they're going to be super late in the circle as well. Yeah, Vitality's still on the west bridge. I don't like it. I think this is way too long. You're overcommitting. No one's turned up. Not too sure what the game plan was there for Vitality. It's not the same team we saw from their stages. Sad. So yeah, unfortunate. It's the same thing we saw in PMGO too. Yeah, it's a big drop-off, which I'm sad to see. Enigma Galaxy, they get their back. This is exactly what I was worried about. It's only going to be Lord. His vehicle's on fire, and he goes down because he hops out.
as it's on fire, they lose their OG को वो दे दिया उसने point. Finish नहीं हुआ था. See how that works out for you. Yeah, I saw his player cam and I could see he said. OG ने kill उठा लिया ना Mghz का. Why are there players here in the middle of the circle? How did I get knocked? Oh, that's crazy. That's super unfortunate. The 2-2 split, man. I mean, losing players like that is so rough. We'll see how it all continues on, though. That's if we have another match after this, because Nongshim Red Force are on the south side of Milta, full squad, looking dangerous. On the other end, you got the other Titans of the lobby, E-Arena, holding down the north side. So both these teams able to secure position as a full four-man team. A vice grip on the circle right now. And our teams will look to try and slip that. This is a replay on Lord getting knocked. You can see he drove up. It was actually the hop out that got him. He'd already taken enough damage and hadn't slowed down enough. He hopped out of the vehicle, kept that momentum, and it was the fall. He hit that ground a little bit too fast. The ankles. ये वाले Just लिपोटा rolled में the बैठ ankle, गया. man. That Rolled the ankle. And now Coops and Satan have to do it all on their loans. And it's a bad time. It's a bad time. I feel like it may have worked before. Teams maybe weren't necessarily expecting something like that, and they weren't looking for a duo to be rotating in such an early fashion, especially because they know, oh, well, these players haven't lost, so it should be a full four come from there. But there's been enough games now when Nigma Galaxy have done this that teams should be like, oh, yeah, that's what they do. Let's just clamp down on that. You know, it's one of those strategies that I don't know whether to be. It's just one of those strats that's just like, okay, it's different. You know what I'm saying? We don't see one of those bad ones. Yeah, I've heard of those. It's bad when it doesn't work, right? That's the thing. Is like if it does, it's like, wow, maybe more teams should try this out. But after that, it's like, I think we just stay together. You know what I'm saying? It's just unfortunate, especially considering that they're in 5th place, man. If they would have got a 20-point game here, boom, they would have been in that smash zone. Let's see where this next circle goes, though. And things are gonna start heating up because we get a nice center. 40 out of zone are gonna be over there in Lipovka, so they're gonna have to fight their way into this next circle. But like you mentioned, it is a vice script right now. North and southern side is where the big threats lie. In the middle of the map, though, you got S2G, you got Nigma Galaxy as that duo. They had four, right? It is what it is. But you got Team Flash on that ridgeline too. That is a very, very strong spot. में हमारा 40 फर्क जो है वो टॉप 3 में देखने को मिलता है और टॉप 3 वाले जो प्लेयर हैं do need to move into the west edge of it a little bit further, which is exactly what Bo's decided to do there. They have to transition forward. The 3-building compound that sits sort of in front of them is viable, but it can be very difficult to hold against teams up on the north, especially if you get crashed. Multiple angles can crash onto it as well, so a little bit tenuous when you have to leave that ridgeline for Team Flash. For Nongshim, they're going to play nice and isolated on the southeast side. Remember, it's not big point-scoring games that are necessary. That's not what's going to be weighing on the mind of Nongshim, of E-Arena. It is just that chicken dinner. Be the last player standing. That's the only thing that should be running through their mind right now to try and secure that tournament title, the global stage glory. That's interesting. That's an interesting thought. And I hope it doesn't change their play style because ULA PMWC where Tianba had such a massive lead and they kind of implored that same strategy. Like, hey, let's just put up some basic points. They had so many points, as long as nobody smashed, they were going to win it for the most part. But they changed play styles and they paid the price for it big time, going from what we thought was going to be an automatic first to like 3rd place. So yeah, we'll see how Nongshim, who definitely learned from that, if they're going to replicate it or play the game that got them here in the first place. 4 Thrives in that last match were able to ignite those afterburners, send them into the stratosphere on the point scoring. And now 4 Thrives want to keep that pace, but they're kind of cut out on this northwest edge. They are boxed in by that prison cliff area on the east side of them. Melta भाई Aurora वालों ने घेरा हुआ है Melta. Vitality may be a good idea to start, but you've got Godlike behind that, and maybe Ulf on the top, on the lip of those prison cliffs could be a target as well. But either way, it feels like a third-party target. I can't lie, I'm so hyped for Godlike right now. After seeing that Rondo match, they put up so many points. If they would have won that fight with E-Arena, it would have, who knows where they'd be on the leaderboards here. But they put themselves in a good position. They're still in 10th place, 72 points. They're going to go for the back-to-back chicken dinner. They realize it, like, hey, we got to get it done here. If they do, it would be the comeback of a lifetime. You know that their fans are excited. They're hyped up.
Oh, yeah. Waiting for this next zone, and it's gonna go on over to the northeast side. And which team gets blessed here, John? Team Flash, right? E-Arena on the north side, on that road down from Lipovka. It helps them out. I wouldn't say blessed, though. I feel like they are still in a little bit of a dangerous position, especially with Horror descending on them. Look at that eastern sweep. Horror ये के पीछे आ गई है. Trouble as Coops takes a knock in the meantime as well on the south side, bleeding out another player. Not good news, but Horror looking at a crash maybe towards E-Arena. I do think it is Team Flash that has been the most blessed by this zone, though. On that northeast side, it's exactly what you highlighted, right? That ridge line, the buildings in front of it, really, really good. But only if it goes out their way. And now S2G try and push in. They're being denied access. As Horror clash with 4 Thrives, who have, they've lapped over the north side of prison, and they're third partying on the rotate here. Nice. Happening all over the place. Now we're going to be looking at Enigma Galaxy all by himself. Going to be challenging Alula here as we switch over. 4 Thrives get eliminated. That is a huge loss. 4 Thrives all dead. Point mark. There goes Enigma Galaxy as well. That's 5th and 6th. And now Aurora up, trying to sweep past Noxium Red Force. As Horror picking up those points is a great result. Match अपना तो नहीं है फिर इतना मैं बता दूं. Right next to Arena, who take a knock as well. 30k. Match. अबे match नहीं मतलब trophy अपनी नहीं है. From every single angle, Ulf will do a lot of damage to them, but S2G managed to weather that storm. A lot of damage across the board. इरंगल तो नहीं खेल पाते ये मैंने इनका हिसाब लगाया है. This fight here is S2G are hurt. Vitality very, very close near to them. And it was OG that are putting up some points on the board. They end up getting 1. Mghz on the other end. Now finally the fight has calmed down, but this is a battle for the central position in this circle. I mean, this is another team, S2G, who is within reach of that smash point barrier up to 122, but they have just had the win taken out their sails. 113 right now. They need to get 9 more points on this match, and with 11 more teams alive as a solo Kamikaze, has he got something magic up his sleeve? I do not think so. We're just going to leave Aurora to really be the only challengers to that smash point duo. या 40 वाले Horror से मर गए यार. That's for sure. 110 points. 12 is super easy for them to get in this kind of position. They're going to have to fight their way through it, though. CS Power getting a knock from Godlike. They're down to 2 players, and that is WizGod going to get that confirmation on 2 Power. Only 1 player up left for Godlike. Oh, the Arena did manage to just roll over to the ridgeline there on the shoreline. But Mormon's been spotted. Okay, Sky is still going. And the Arena not safe yet, not out of the woods. There's Godlike and Orangutan. OG वाले और Gordon वाले ही लड़ते रहते हैं आपस में. Up the stairs, Godlike. वो ले गया. But the drop down is called. And there's the crash. You want to take 1 down and the Arena fall. Only 1 team can stop it all now. Aura ने भाई दवाई डाल रखी है यार. Aura के 10 elimination points. 11. One of the Titans is gone. It's still up to Nongshim Red Force though. Down the south side, playing carefully, waiting in the shadows to strike. It's only a matter of time here. They're thinking, yeah, you guys fight it out, but you better watch out. Ooh, a big south shift, and Alula are looking tasty for Nongshim. Look, they're already in those vehicles. XZY wanting to keep Overwatch on the angle as well. Maybe take some shots out that way. How fast are Nongshim going to be able to mount up? Because Flash have already regrouped to the triple stack buildings on the north side of this next part of the circle. The west Orangutan also to try and find a way down the hill. The Deadwood is so hard to these really tricky defilades, and there are players lying in wait. Speaking of lying in wait, yeah, you can see Nongshim Red Force. They don't want to give away their position. They don't want the lobby to know where they're at right now, so they're playing it very, very quietly. So take a look at this replay. Schweppes, popping them out the vehicle, but the crash from Aura, so strong here. And they shut down E-Arena. Huge fight for the whole lobby. Absolutely. Arena remain on 122 as well. Doesn't mean they can't win it all next match. They are still in the smash boundary. Yes, they are. So even if Nongshim get 30 points and don't win the chicken dinner, they could still take it all away with a 0 E-limit. Aurora want to put themselves in the smash zone. इस मैच में अगर प्लेसमेंट पॉइंट नहीं ले रहे थे 40 को तो कम से कम एलिमिनेशन तो निकाल कुछ भी नहीं मिला हमें बड़ा दुख हो रहा है यार. Decide to go for this hill line here. Good strategy.
Gotta be careful though with those shots from Flash. Yeah, there's... Throwing down some smoke. I like how they put one vehicle in front of the other, so they at least sacrificed one. But they should be able to hold on to at least another one here in a second. They're going to have to pick a point to go, and I feel like sure, Team Flash can be taking shots right now, but the west side is going to have to conclude, and fairly quickly. Someone is going to look to crash Team Flash. I can guarantee you that at some point in this match. Yeah. But it may be a little bit longer than we were anticipating. I mean, as I said, the Deadwoods have a lot of those defilades, the hills that slope down from the top of this ridgeline. This tree cover has a lot of rocks to play around. You can sort of stutter your way forwards a little bit, but later on you're going to have to find something. Oh, spot over onto Doc. They know who they're fighting now. Well, they will once that thirst happens. There it is. And there it is. So now they know 100%. Nongshim Red Force is right here. Aurora are going to put every single amount of their resources to make sure they can stop them. अबे जो कम्बो देख बड़ी टीवी का जनरेटर प्लस B90 ये तो फाड़ देगा भाई. Fairly quickly. Just sitting here waiting for Nongshim to roll out, stepping through, sacrificing shots to Team Flash. They may look to try and just block the road, shut the door in the face of a Smash victory here in match number 2 today, match 14 on the series. To be fair, this is going to be a very tough win for Nongshim to get. They're in a really, really tough spot here. They are on the edge of the circle. That broken wall is covering them for now, but this next zone is going to make Only it OG like, versus Furia. a huge battle. It's Furia versus OG. Furia in 8th place right here. They need the win. Oh, that nade looks good. That should get a confirmation. It doesn't. Some way, somehow. Bad nade there, but all of a sudden, they are able to get some knocks. Silence is going to go into the building, eating some blue zone. Furia are getting peppered little by little. He gets away with just 1 HP. Oh, WizGod steps out. He's looking for more. He's got the shotgun. OG वाला. Oh, WizGod. अबे भाई WizGod कहाँ से पीछे से आगे लेके गया. अगरचे वो लोग डैमेज थे. थोड़ा आगे खप करने. OG वाला बेटा पीछे. नहीं अब नहीं होरा नहीं आने दे रहा आगे भाई किसी को. वे OG WizGod ने क्या मारा है भाई. ओके गाइस अजान हो रही है बेट. माइक बंद करो आप लोग देखो स्ट्रीम. XZY trying to regroup now on the back. The reloads are coming through and he may be able to sneak his way into the dip. And Aurora now have Nongshim set before them. A gauntlet to run through and then one that they will charge in headlong. Nades first. Zul, Reefus. And Top wants this retribution. Draw this game to a close without a smash point victory. Aurora throwing an absolute bombardment onto Nongshim Red Force. They know they're the threat. They're going to use every single piece of utility they have to finish this team off once and for all. Not able to find those other confirmations. Vehicles are getting moved out the way, though. That's the coverage that Nongshim Red Force desperately need. Looks like they're playing a little game of ping pong with that car. Ooh, but Aurora starting to suffer as well. They have to move forwards, and now they're in the firing line of Team Flash. It may well be enough to stop Nongshim from winning the game, though, and that seems to be what they were trying to bid for. All the while, by the way, Kamikaze is still alive, so can't discount him just yet for getting the points that he may need. It would be a very long road, though. Hyunbin and So Easy now find the final blow, struck to the heart of Aurora, who draw their game out on 113. They will fall to no smash. Not here, not now. We're gonna see a game 3, folks. Get excited, get hyped, because now's the chance for a lot of these teams to start pushing their way up the leaderboards. How far can you go here, though? I mean, for Team Flash, this is a golden opportunity to jump up placement points, to jump up and get a little bit more cash under the belt, be a higher ranking finisher. They have all 4 of their players alive. They're looking pretty chill. As I said before, S2G do have the slimmest of opportunities. For me, it's Kamikaze needing to grab some third-party points off a fight that Team Flash has. Yeah, he's just trying to sneak it enough points to sneak his team into that smash zone. Any point matters, though. I really got to give some major love, though, to Aura. Look at them. 13 eliminations. This team is trying to make a comeback of a lifetime, and this is how you do it. Got to get this win, though. Anything less is not going to be enough for them to make that race to the top. I mean, even
even when you do get it, it's still a long, long road for them to try and find. For Kamikaze, he needs to profit 6 more points on this match. Those can come from either increasing placements or getting eliminations to join that smash point bubble. But this next circle comes in, it's not going to have him in it. It does push Flash into into a few of their locations, but it looks like they've spotted him. Kamikaze is there, they roll up, he's put down, and no longer do we have that storyline. The battle at the bottom of the tables rings true for the final 4 here. This is huge. Everyone's trying to move up their placement here. Like, again, this is a massive prize pool. Every single placement up is big money in the bank. Aura, though, this is the game of a lifetime for them. This is one of those opportunities that gets your squad excited, gets them pumped up to finally start putting everything on the line. You can see Team Flash, though, they're in the mix here. Aura trying to push from the edge of the circle. They're going to start throwing all their util onto Vitality. That's the threat. If they can hold that rock and secure that position, this could be a solid chicken dinner for them. Absolutely. A big chance. As the nades keep on going forwards. 13 eliminations on side, and they want to add 2 more to the tally. Sky and Jiggle into the fight. Razak goes down first, immediately putting him out of business, out of action. Sky looks for more as well, and they turn it on. It's just too hot. Aura are on fire. 15 eliminations, but that nade looks dangerous. Gotta watch out. That one hurt, and now it's up to Sky. All by himself. Aula looking to stop the insanity that Aura has put on display here. Here they come. Yasser moving up close and personal to be able to secure this high ground. Team Flash on the other end, putting some suppressive fire onto them as well. Aura just trying to lick their wounds, trying to find their way, but it ain't gonna be enough. That is Aura down to 1 single player. I like Team Flash's proactivity here. They didn't waste time. They didn't hide in the buildings. They stretched their legs and moved out towards this north side to get control of the zone. This is what we've wanted to see from a lot of our teams, and I'm glad to see it now, even if it is potentially a little bit too little too late. For them, they've got 10 eliminations here, so Aura, they're on 15, but there is a real chance that they could catch up. A Sky is still cooking an aid, and Alula are gonna have to worry. Okay, he puts it back to the shotgun shell. He's not moving a muscle here, and I don't think Alula realizes that he's even still there. They have to know there could be a threat in this area. But Quick is just hopping in the vehicle to get a little bit of extra third-person perspective and get some sight lines. Plus, he's protected in there. He has no idea. They have no idea he's there. Hello! He missed the shots, though! Sky gets the knock, but gets shot in the back as Win from Team Flash shuts down Aura's run. Pretty mighty flub there on the shotgun, hot over the bonnet there. Probably didn't realize, but Quick didn't know he was there and thought, oh, well, I'm gonna have to go for the fight. He's gonna stand up for it, right? Right? Not to be. Ooh, a cheeky little pick onto Zeus, and actually, Bose is quite low. Over the top, though, Tops and Win look to put pressure onto Quick, and remember, Alula only really have 2 players to play around with here, Claws and Yasser. Looking to navigate closer to the middle for Yasser, but Flash can regroup on 3. Claws has a lot to face down on his lonesome here on this angle. Needs a big nade, needs to find a knock pretty immediately, and is already taken down. Win steps through with the AUG, puts that one to bed, and a second volley of fire over the top of the rock sees Team Flash to the chicken dinner. I'll take that one, that's for sure. Over 20 points in that game. A massive one for them. I guarantee you, their coaches, everybody was telling them, right, hey, this is what you need to do if you want to make a run of it. And this is a start, right? This is a start. It's still a long road ahead, but now the road is there. You know what I'm saying? It had to happen in this game, and they got it done. That's what you need to do. When that clock strikes, you've got to hear the call and step up to that plate. Unfortunate that Nongshim and E-Arena couldn't really get much further into that one. That Aurora hold on the eastern side, it stopped them really from being able to break out in the way that they wanted to. Flash were an incredible suppressive force over the course of a lot of that final set of circles. So really, really great stuff from them. But yeah, it could have been very, very different if Aurora had played that slightly in a different fashion. For sure. I mean, unfortunate for them, super fortunate for the rest of this lobby as we're going to go into one more game for sure. Now, as far as teams that are still within that
that Smash Point threshold, I believe it's still going to be the duo, Yep, right? It's still just going to the be the two teams. But another opportunity in this next game, right? For more squads to be able to push their way on up. As we're going to take a look at the replay here. Team Flash, great job of being able to finish this game strong. Win especially, just boom. Putting the nail in the coffin. That's how you do it. I just didn't want to mess about, you know. He knew. Let's get to the next game. Come on. Let's go next. Keep the pace, because they do want to keep up that pressure. If you're on a run, now is the time to hold on to that momentum. There is no more runway that you need to cover to take off on this. It is just today. There is nothing that you want to leave out on Erangel and let it go to Miramar, because you may not reach it. No one might. Just look at these players' faces. Straight intensity. These guys are locked in right now. They know exactly what they need to do in order to make this happen. And it's going to be on the back of a ton of eliminations and securing those wins, all while stopping E-Arena and Nongshim Red Force, who had a great pincer on the end of that circle there. But, you know, I think teams now especially have understood just how threatening this smash rolling is. Yeah. And I think they're going to do extra and beyond to make sure that they can stop those two squads. Absolutely. I mean, there is so much pressure on so many teams. I think that, again, I'm gonna go back to my old favorite hobby, it seems, this game of giving a little bit of hate over to Ralph, because nvme, that 2-2 split did not work. It was really kind of catastrophic. And hey, you know what? The position that they went to, that they tried to go for on that east side, was where Team Flash won from. So could have been different. But we're gonna head down to the stage. Kalaris has a little interview for us for some inside information. Yes, I do. Thank you very much. Here with Nongshim Red Force, Hyunbin once again to get some insights on what's gone on so far. Let's talk about the Erangel that just actually happened. You guys found yourself in mini-mill to power, but then the circles shift away from you. You sent it north instead of any other direction. Talk to me about that choice. Do you think it was the right one, or do you think there was another path you could have taken? 일단 현빈 선수 첫 번째 질문은 일단 아까 에란겔 경기부터 일단 얘기를 해볼게요. 에란겔 경기 때 사실 밀타 파워 쪽의 공장을 이용하셨다가 이제 자기장이 튀자마자 이제 바로 북쪽으로 지르셨는데 사실 그쪽이 좀 다른 선택권이 없어서 좀 강제가 된 건지 아니면 좀 그게 좀 가능성이 있다고 보신 건지 좀 궁금하네요. 일단 저희 자리에서 치킨 갖고 오기는 좀 많이 힘들었던 것 같고 저희가 오로라 한 명을 잘라나왔고 그 골에서 오로라 일단 한 팀 먹고부터 할 생각이긴 했습니다. Yeah, we already knew that that shift was actually really tough for us. So what we thought was Aurora was actually there, and we got a one knock of Aurora player. So I think we should have started with getting out, knocking out Aurora, and then we find our footing on the ground inside that circle. So the Rondo game, you just won another one here. You look always great in urban endings, does Nongshim Red Force. So talk to me about that urban ending. What were your biggest concerns? You had great roof control. So what was your guys' perspective on that finish? 또 론도판에서는 또 치킨을 드셨는데 사실 시가전에서 정말 좋은 모습을 보여주시는 것 같습니다. 그래서 그 시가전에서 특히나 이제 지붕을 통한 영역 컨트롤에 굉장히 또 일가견이 있으신 것 같은데 좀 그 점에 있어서 좀 어떤 점을 좀 중점으로 플레이를 했었는지 궁금합니다. 그 론도 플레이 때 시가전 플레이 때 어떤 플레이를 중점으로 두셨는지. 일단 저희 자리가 외곽이었고 저 시가 쪽 한쪽이 비었어갖고 일단 들어가서 서클 받다 보니까 그냥 좀 잘 먹은 것 같아요. Well, honestly, I think the inside of the city play was actually well forced because we were outside of the circle. But that being said, I think we were kind of lucky because we tried to gain the footing because of actually one of the places are actually empty. So we just find our footing there, and then we just took a control of the roof, and then we maintained good condition and intel. All right, well, thank you very much for joining me, Hyunbin, here once again. That's Nongshim Red Force currently in position on the smash rule as we continue the games here at PMWC.
We book ESPORTS World Cup. Nongshim Red Force and E Arena not being able to close it out, so we're gonna keep going. One more match in this one. Team Flash being able to come off with a win there after not really being able to do much for the whole tournament. Great performance out of this squad, but don't forget, for everybody that's currently here at EWC, make sure you guys check out the fan experience. Go look at the awesome stuff between PUBG Mobile and Naruto. Try out Brain Rot Royale, why not? Because we've been able to try it and it's quite fun, and I played it way too much. I had to stop so I could actually come here and break down what's been going on in the finals, and also check out Spider-Man. Maybe you'll get a chance to meet him and greet him. But about this performance from Team Flash Max, we finally got a chance to see them perform. I never doubted. No, I have been doubting a little bit. It's been looking a bit dicey recently, unfortunately. But no, really good hold on the northern side, right? Able to get rid of a lot of threats over in that position. Definitely a team that has been very silent. But before this game, they had a total of 63 points. If my count is right, they just got about a third of the points they've made so far up until now out of all of their games in a single chicken dinner, 23 points. So that's going to get them way higher up in the middle rankings. And let's keep in mind, even if you're not number 1-7, the prize pool distribution is getting way higher on that first half of the leaderboards. It is. For some of these teams that might be too far away from that threshold of the smash rule, they're going to be pushing up because there is that prize pool at stake. $3 million that we're going to be giving out. And Horror Esports being able to perform really well, seeing the aggressiveness. This is what we've been expecting out of Horror Esports, the aggressiveness, 16 eliminations. I mean, it's a real shame we just didn't see this from the get-go, right? From day one throughout to today, because they could have been in a very different position on those leaderboards than we see them right now. But also, just mention very quickly, as we look at the team stats here for Sleepy and Sky actually doing some mega work. They did have some really good nays. They were pushing very well. They are the team that got rid of E Arena in the mid phase of that game, taking shots onto Nongshim there. So, you know, very, very proactive, really looking around them and trying to get as many elims as possible. I think we can call that farming. They were farming a little bit. They definitely were. But actually, the key thing we have to keep in mind for Horror here is they are the team that eliminated E Arena, which is a team, if you get that elimination, one of the plays, you're like, that's E Arena. That's E Arena right there. Go. Push them. And then they did it. And because of that, right, Lace, they delay the tournament just a little bit more, which really is going to make this event so much more interesting because so many teams can enter the Smash Zone. I know, and how crazy it is that the top of the leaderboards seem to fall, and then these mid teams sort of have that glimpse of hope and opportunity. But that's why we love it here for PUBG Mobile with the Smash rule, especially. Now, I do want to sort of draw your attention to S2G, a team that is quite incredibly close to that Smash rule. But if we talk about the first game, we didn't really get to chat to them sort of in that first mid-section. They had a nice recovery, a little bit of a hot drop, couldn't capitalize on as many eliminations as they wanted to. The roughest zone shift for them, they had like that kind of open terrain they couldn't really move in. And then they passed. And then this game, again, it kind of like they're losing their team so incredibly early after eliminations. You saw Kamikaze there on the north side trying to sponge those points, but again, falling short. Look how incredibly close S2G are, 116.
they should have done it earlier. Just 6 points away from being able to enter the Smash Zone. Aurora Gaming as well, currently 9 points away. And teams that were going to be looking to be able to close that gap, especially when we saw Arena get eliminated. Nonstrom really not going for that many eliminations, playing it quietly. Fourth. वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। वी आर बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। मेरे साथ प्लास्टिक सर्जरी करवा कर गेमिंग पोर्टल की सूरत में ही आ चुके हैं अलादीन। वेलकम अबोर्ड, हैप्पी टू हैव यू हियर फॉर द नेक्स्ट 2 गेम्स। और काफ़ी अच्छी वाइब्स आई हैं मुझे एकदम के लिए, जैसे ये ब्रेक से वापस हम लोग आए हैं। और वो इसीलिए आई हैं क्योंकि मैं इदाद देख रहा था अलादीन रैंगल पर, और उसमें NSR ये एरिना का कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा जिन्होंने कंसिस्टेंट रैंगल के मैचेस खेले हों। सो देयर इज अ चांस कि शायद मौका मिल जाएगा इस लॉबी को, इस कंपटीशन को मजीद आगे बढ़ाने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हमने टॉप टीम्स के नाम देखे वहां पर इनके नाम दिखाई तो नहीं देते, लेकिन खैर फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा मैं। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लेकर हम दोनों आए हैं, यिन एंड यांग, यस्सू और पंजू और साथ जितने आप लफ्ज मिला लें साथ। वो क्या था, चेन एंड विल्सन, और उसका उर्दू में तर्जुमा था बढ़ते पट्टी। लेकिन चलें बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मैच रैंकिंग की, जहां पर फ्लैश उनकी तरफ से एक बड़ा जंप लिया गया 23 पॉइंट्स के साथ। 13 एलिमिनेशन हो रहा है स्पोर्ट्स। पिछले मैच में तो हो रहा है स्पोर्ट्स मोरल पुलिसिंग कर रही थी, जहां उन्हें कोई नजर आता था वहां उन्हें कहा जाता है, डंडे मार मार के कहा जाता है कि क्या कर रहे हैं आप, इतने की कर रहे हैं, सोन में जाओ। 21 एलिमिनेशन स्टार्ट उन्होंने किया 4th राइज से, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। लेकिन जहां बिल्कुल आपने सही कहा, शाहिद जट बने हुए थे होरा स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, लेकिन थर्ड स्पॉट पे अल उला क्लब दिखाई देता है विद 9 एलिमिनेशन, 9 टोटल पॉइंट्स, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है। टॉप 2 टीम्स वही सारे पॉइंट्स ले जाती हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। फ्लैश ने बेशक बहुत शानदार खेला, एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स अभी भी आना बाकी हैं ख़वातीन और हज़रात के, वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है। हो रहा स्पोर्ट्स वो अपने आप को थोड़ा बहुत आई वुड से कि पॉइंट्स के मामलात के अंदर एक बैड पोजीशन से अपने आप को एक अच्छी जगह के ऊपर ओवरऑल स्टैंडिंग्स में लेकर आ चुके हैं, जहां पर शायद उनके पायदानों में इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन वो पॉइंट्स का जो एक मैसिव डिफरेंस या गैप आप कह लें उन्होंने कैप्चर किया है, उसकी बदौलत आने वाले मैचेस अगर तो मिले
इनफैक्ट एक और मैच तो है ही है, एट लीस्ट एक और मैच तो इस सारे कंपटीशन का है ही है आने वाला। अगर उसके अंदर भी ई अरीना या एनएसआर अगर चिकन डिनर ना किया दोनों में से किसी एक टीम ने, तो फिर आगे ये कंपटीशन आपको मजीद एक और गेम चलता दिखाई देगा। लेकिन खैर लेट्स सी होरा ई-स्पोर्ट्स आने वाले मैचेस के अंदर किस तरह से खेलती है। कंसिस्टेंट रहना है। होरा ई-स्पोर्ट्स की सिर्फ एक छोटी सी गलती ये रही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए सारे ग्रैंड फाइनल्स के सफर में। हालांकि कल के दिन का आगाज मिरामार के मैचेस जो हुए पहले दो, उसमें होरा ई-स्पोर्ट्स के काफी अच्छे पॉइंट्स थे। इनफैक्ट के ऐसे लगा कि शायद होरा ई-स्पोर्ट्स आपको ट्रॉफी की दौड़ में दौड़ती दिखाई देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी टीमें बहुत आगे निकल गई उस दौड़ में और होरा ई-स्पोर्ट्स काफी पीछे रह गई थी। लेकिन वापस से दे आर बैक इन एक्शन वंस अगेन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हो रहा स्पोर्ट्स हमने उन्हें कंपटीशन से दूर जाते हुए देखा ज़रूर था। कल के दिन के मैचेस की बात करें स्पेसिफिकली, हालांकि कल नंबर ऑफ मैचेस इतने ज़्यादा थे कि हम बात कर रहे थे कि जो आज के दिन पहले चंद मैचेस में अच्छा खेल पाएगा वो पूरे दिन के अंदर एक तारीख रकम कर सकता है। और दे हैड अ चांस टुडे जिसे गवा दिया जाता है। नाउ इट्स अ चांस कि जाने से पहले अच्छी छाप छोड़ी जाए, पॉइंट्स टेबल पे वो अनएक्सपेक्टेड कमबैक्स दिखाई जाएं। अभी 4 मैचेस बाकी हैं, 60 से ज़्यादा पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं 4 मैचेस में अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं किसी एक टीम की बात कर रहा हूं कि कोई भी एक टीम जो बहुत अच्छा खेलती है वो 60 पॉइंट्स लेकर जा सकती है। लेकिन बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग की, जहां पर नॉन्गशिम रेड फोर्स एनी अरीना उन्हें कोई और ज्वाइन नहीं करेगा। फोर्थ राइव्स 99 पॉइंट्स पे मौजूद हैं, 75 एलिमिनेशन। अभी भी इस पेज पर देखा जाए लोएस्ट प्लेसमेंट पॉइंट्स उनके पास हैं, दे आर हियर विदाउट ए चिकन डिनर। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको मैं एक मज़े की बात बता देता हूँ। फोर्थ राइव्स वो इस कंपटीशन से चिकन डिनर लिए बगैर नहीं जा रहे। और अगर मैं आपको कहूँ कि शायद वो 2 चिकन डिनर्स लेकर जाएंगे तो शायद आप हैरान हो, लेकिन यही हकीकत है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। बढ़ेंगे आगे, विल टॉक अबाउट अरोरा गेमिंग जो कि 4 पर मौजूद है। कल के दिन का इख्तिताम किया था #1 पर, अभी #4 पर आ जाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। S2G पिछले मैच के अंदर बड़ी जान मारी उन्होंने। आप देखेंगे पिछले मैच में कुदरत का निज़ाम कैसे साथ निभाता है कि अरोरा दे वर सो क्लोज कि वो स्मैश पॉइंट का टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन उनकी फाइट बनती किससे है? उनकी फाइट NSR से बन जाती है। जो अगर चिकन डिनर निकाल लेते तो शायद ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता और दोनों आपस में लड़ के एक दूसरे के प्लेयर्स को एलिमिनेट करवा देते हैं और एंड पर आकर होरा ई-स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी कर NSR के आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट कर देती है। लेकिन खैर वहीं पर फोर्थ राइव्स इंशाल्लाह ये जो मौके मिल रहे हैं, आई वुड से कि ये कुछ अच्छा ही होगा इसमें। और दुआ है कि इंशाल्लाह टीम फोर्थ राइव्स अगले मैच के अंदर चिकन डिनर भी निकाले और स्मैश पॉइंट के टारगेट को भी अचीव कर लेकर जाए। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी बुनियाद के ऊपर काफ़ी कुछ जिस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, इरांगल्स का पॉइंट एवरेज ग्रैंड फाइनल्स में किसका सबसे ज़्यादा रहा है। S2G का नाम सबसे पहले नंबर के ऊपर है। 13 पॉइंट्स की एवरेज के साथ इन्होंने अब तक के इरांगल्स खेले हैं 6 मैचेस, 3 और 3 2 दिन के डे 1 के और 3 मैचेस कल के दिन के डे 2 के इरांगल के मैचेस। और S2G ने 78 टोटल पॉइंट्स सिर्फ इरांगल पर कंफर्म किए हैं। ई अरीना उन्होंने बेशक चिकन डिनर उतने ज़्यादा नहीं निकाले, लेकिन ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस इरांगल पर रही है वो बेहतर रही है। उन्होंने भी तकरीबन 8 पॉइंट्स पर मैच के एवरेज के साथ खेला। अरोरा गेमिंग का एक और नाम रहता है जिन्होंने इरांगल पर अच्छा खेला, लेकिन सबसे ज़्यादा चिकन डिनर्स की अगर आप बात करें इरांगल पर किस टीम ने निकाले हैं, वो नाम S2G का रहेगा। 78 पॉइंट्स टोटल निकाले। लेकिन वहीं पर टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स में से टीम फोर्थ राइव्स का नाम चौथे नंबर पर आता है। 48 पॉइंट्स इन 6 गेम्स इरांगल के अंदर कंफर्म किए हैं। चिकन डिनर कोई भी नहीं आया। आप पूछ रहे होंगे कि NSR का नाम क्यों नहीं मिले रहा? क्योंकि NSR की इरांगल पर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। फाइनल्स के अंदर एक भी चिकन डिनर उन्होंने अब तक के इरांगल के किसी भी मैच में कंफर्म नहीं किया और उनका पॉइंट्स एवरेज भी कम बन रहा है। तकरीबन 5 पॉइंट्स का एवरेज है उनका इरांगल का। NSR की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इरांगल्स के ऊपर वो परफॉर्मेंस आई तो नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि दिन के इख्तिताम में और दिन के स्टार्ट में ये 2 ऐसी एक्सट्रीम्स हैं जहाँ पर हमें NSR डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है। अगर फैक्ट्स को देखा जाए, फिगर्स को देखा जाए, नंबर्स को देखा जाए, प्रेशर थोड़ा सा उतरेगा ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे अगले मैच की। आगाज़ करेंगे इस मैच का बिस्मिल्लाह के साथ और देखेंगे कि वो ड्रॉप फाइट्स होती हैं, वो अर्ली ऑन फाइट्स होती हैं, नहीं होती रोटेशनल क्लैशेस होंगे, नहीं होंगे सर्कल कहाँ जाएगा, ये सभी चीजें जिन पर हमारी नजर है। हो रहा है थर्ड मैच स्टार्ट हो चुका है। पड़ेगी अगर पॉइंट्स टेबल पर एक बड़ा जंप दिखाना है। यू प्लेड रियली वेल इन द लास्ट मैच, हैशटैग पर आप आए हैं, लेकिन मजीद ऊपर आना है, ब्रीच करना है टॉप 5 को, तो एक और ऐसा बड़ा मैच निकालना पड़ेगा, या शायद 2 ऐसे मैचेस बड़े निकालना पड़ेंगे। 79 पॉइंट्स पर ये टीम आ चुकी है इन टोटल।
57 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ 1 चिकन डिनर 30 पॉइंट्स। सीधा जंप करेंगे #5 पे या #6 पर। सोहोरा यू रियली नीड दिस मैच। और अगर आप याद करें आदि PNG और रिकॉल करें, होरा ई-स्पोर्ट्स वो आखिरी चंद मैचेस में इसी तरह खेल रही होती है। अगर आपको इनका वो मैच याद हो जहां पर शायद उन्होंने 5 या 7 ही मैच में 10 से 12 एलिमिनेशंस निकाले थे ऑन द मैप रोंडो, तो शायद आपको रियलाइज होगा कि लास्ट डे के ऊपर जाकर होरा कितनी ज्यादा लीथल हो जाती है। बट फॉर नाउ सर्कल टेक्स अ वेरी वियर्ड शिफ्ट। क्या लगता है, ग्रीन आइलैंड या मिलिट्री साइड? आई थिंक सो इस बारी सर्कल मिलिट्री साइड पर जाने वाला है। पिछला सर्कल भी कहीं ना कहीं आपको मिल्टा पार ग्रिड के नज़दीक आकर ख़त्म होता दिखाई दिया, लेकिन इस बारी सर्कल मुझे ऐसे लगता है कि एक बैक फ्लिप खाकर मिलिट्री बेस की साइड ज़रूर जाएगा। लेकिन ये सर्कल्स बड़े मुश्किल होते हैं खेलने के लिए, ख़ास तौर के ऊपर ये मिल्टा पावर शेल्टर वाली साइड के ऊपर अगर कोई सर्कल बन जाए, वो जो फॉरेस्ट एरिया आता है। एंड जी हाँ, बिल्कुल अभी के लिए अरोरा आपको यहाँ से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यार ये सर्कल्स जो है ना, ये थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। मतलब इतनी उम्मीद लेकर इंसान मैच में उतरे और ये सर्कल्स जब आते हैं ना सामने, ये पानी फेर देते हैं। लेकिन खैर, नाउमीदी गुनाह है और नाउमीद आपको बिल्कुल भी होना नहीं है ख़वातीन और हज़रात। 4 थ्राइव्स मौके तो मिल रहे हैं और सिर्फ 4 थ्राइव्स को नहीं मिल रहे, बाकी सबको भी मिल रहे हैं। निग्मा गैलेक्सी को भी मिल रहे हैं, S2G को भी मिल रहे हैं। हर पूरी की पूरी लॉबी को मौका मिला है एक और। ये कंपटीशन ख़त्म हो चुका होता शायद अगर पिछले मैच में NSR चिकन डिनर कर जाती, तो अभी हम अफसुर्दा हुए होते कि ये क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अनदर डे, अनदर बिगिनिंग, एंड लेट्स सी के इख्तिताम क्या होगा इस सारी कहानी का। ये जो एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की, ये फुल स्टॉप कहाँ पर जाकर लगेगा? वो आखिरी पन्ना है ये सारी कहानी का, जो आज के दिन हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सो लेट्स सी के क्या किस मोड़ जाता है कंपटीशन। अभी के लिए 4 थ्राइव्स 99 पॉइंट्स पर है, 122 पॉइंट्स के मार्कर तक उनको पहुंचना है जैसे तैसे कर इसी मैच में। एंड वहीं पर देखना ये भी लाजिम है, अबे खाया ही नहीं, तेरे को पागल बना रहा है यार। जिन्होंने बेशक इतने चिकन डिनर्स तो एंगल के ऊपर कंफर्म नहीं किए, कहीं वो एक धचका ना दे जाएं इस पूरे लॉबी को। वेल प्रीवियस मैच जो गवाया है टीम 4 थ्राइव्स ने, उनके मुकाबले में जितनी भी टीमें थी और मैं 2:30 बजे तक मोबाइल चलाता रहा, ये भी सो गए मैंने से। वो बहुत बुरी तरह हर्ट करेगा। अभी के लिए देखा जाए 4 थ्राइव्स, निग्मा गैलेक्सी, अरोरा, S2G, ऑल दीज टीम्स ये पॉइंट्स टेबल पर एक दूसरे से दूर तो हैं, लेकिन ये एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये एक ही तरह से इनको एक ही कंडीशन से डील किया जाएगा, और वो ये है कि ये स्मैश फुल पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। इनकी जानिब से वो जो स्मैश पॉइंट्स थे वहां तक पहुंचा नहीं गया। नाउ इट्स अ चांस फॉर टीम नॉक्शम रेड फोर्स एंड अरीना टू एंड द कंपटीशन राइट हियर। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या नॉक्शम रेड फोर्स एंड अरीना उन्हें किसी तरह से रोटेशन गेट कीप किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा? वैसे तो जैसे ही आप कोई एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे और आपको रियलाइज होगा, आप लॉबी में कोई भी टीम है, आपको रियलाइज होगा कि नॉक्शम रेड फोर्स है या ई अरीना है, आप स्लामिन के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे। यू विल ट्राई कि जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि ये टीमें चिकन डिनर ना निकालें, बिकॉज अगर आपकी प्रायोरिटी यही है कि आप खुद पॉइंट्स निकालें एंड देन नॉक्शम रेड फोर्स चिकन ले जाती है, एरिना चिकन ले जाती है, तो फिर उस प्रायोरिटी का फ़ायदा ही नहीं है। आप कहेंगे कि हमें मौका ही नहीं मिला, पूरा दिन ही नहीं मिला अच्छा खेलने का। और मैं यही सोच रहा था कि अगर कंपटीशन ख़त्म हो जाता है थर्ड मैच के अंदर, सेकंड मैच में हो जाता, तो टीमों को कम दुख कम होता इस चीज़ को सोच कर कि चलें हमें मौका नहीं मिला, शायद मिलता तो हम कुछ कर पाते। लेकिन जो हम आखिरी मैच के करीब जा रहे हैं, वो मौके कम होते जा रहे हैं। तब जब आप नहीं जीत पाएंगे, नहीं फर्स्ट स्पॉट अपने नाम कर पाएंगे, नहीं ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे, तो आपको दुख ज़्यादा होगा कि हमें मौका भी मिला, हमने उसे गवाया भी। लेकिन चलें 4 थ्राइव्स हमारे सामने हैं। निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स वो शायद इंफॉर्मेशन लेने के बाद रैप अराउंड करने के लिए आएंगे आगे। कूब्स की गाड़ी का अंदाजा होता है, सेकंड गाड़ी चेंज करना चाहते हैं। क्या खूबसूरत स्प्रे जाएगा, एक और गोली, एक और बुलेट और सेटन नॉक हो सकते थे, लेकिन लकी रहेंगे, सेटन बच जाते हैं। ये पहला एलिमिनेशन पॉइंट 4 थ्राइव्स के खाते में जाने वाला था। लेकिन IQ उनको देखें आप, जैसे उनको रियलाइज हुआ कि बुलेट्स मिस हो गई हैं, गन स्विच करना पड़ेगी या रीलोड करना पड़ेगा, फौरन से गाड़ी उठाते हैं, फॉल बैक करते हैं। वो खुद अपनी कैजुअलिटी नहीं देना चाहते। यही होता है EWC लॉबी का प्रेशर, यही होता है EWC की लॉबी के अंदर जो
ओपोनेंट्स की भी आपकी कह सकते हैं उनका जो एम है वो इतना शानदार यार, है, इतना बड़ा तगड़ा बच्चा है, है यार, आपको पता है कि बिलाल अगर का आपने बच्चा। 1 सेकंड या चंद मिली सेकंड्स भी दिए सामने वाले प्लेयर को तो वो आपके ऊपर रिटालिएटरी नॉकआउट्स निकाल सकते हैं। लेकिन निग्मा गैलेक्सी जहां फोर्थ राइव्स के हाथों बचते हुए दिखाई दिए, आगे जाकर एक और टीम के हाथों नॉकडाउन होते हुए नजर आते हैं। ये वो टीम है जो अपने नंबर Towards the 100 now, so they've also hit the century on this game. Getting ever closer to that count. Nongshim Red Force was able to make a fairly good सलमान rotation का टाइम बता towards मैच का कितना हो They गया? like to play around this area. They are cut मेरे in पास with 6:52 S2G though. तेरी स्पिन बीच चल रही है आगे। Spot to be working with, very central. मेरे पास 7 मिनट पूरे। Anything can happen as long as they're set up. Position मेरे पास भी 3 should be okay. Ulf finds S तेरी power. 3 सेकंड आ गया। He is a clap back from Admino, who immediately will flush out Scarface. So full-on engagement here between Ulf as well as Godlike. Already big shots being connected. And it's wiped up so quickly. Ulf withstand the pressure. They do lose one player, but they can get Aaron back up. And that's a huge self-defensive for them. Keep him in play, reset with the meds, and grab the extra loot. For Aaron, what a run it's been for him during this tournament. Max was highlighting him on the desk of how much he was able to really prove himself here at this event, despite having some awkward moments, honestly. Still remember his crash into gas station, which went terribly wrong, but even then he is putting up numbers. OG do take a knock there to Tiamba, who have been sadly very quiet after day one. A majority of the points earned there, if they were able to replicate anything like that day one and day two or day three, they would have won this tournament by a mile. Sadly, that's just not the case. Trying to get back into the mix of it now, though, is Milu. So let's look for these nades. Maru on about half HP there. AKOP in the back line. Nice arc from Milu. Milu the madman, when he's feeling himself, he can do so much damage on a battleground. He's got back up from the boys. If they can get out of this one cleanly, maybe they can at least try and ruin some of the runs for the other squads above them. And Milu keeps it going to get that flush as well, so that will remove Aru. Hard cut him out. Blue. Tiamba, as well as OG. Be right in zone 2 now. Blue starts to tickle a fair bit. QZZ gets a bit panicked there. Will drop a couple of shots through and then immediately send in Milu. He's just going to prime the nade. That's a nice. Milu, बड़ा grenade. Lets it go through. Is he going to peek this onto AKOP? It's me. Does not care. ये grenade आया. अब ही टीममेट उड़ा दिया. Oh, Tian, nice. Make sure they clean up on that one. Trying to snatch away. इंडिया की दोनों टीमें हराम रास्ते गई भाई. Good to see Tiamba though, getting a bit of fanfare back from the crowd and big plays from Milu. I think he was sat on about 11 elims off the back of 3 games back on day. जी हाँ यहाँ पर 40 वाले जोन की एच के ऊपर दिखता हुआ. That's for sure. कुछ उनकी साइड के ऊपर पहाड़ी पे मौजूद. The team again. Apartment के करीब. Subs came through yesterday. Shallow in, Milu out, but looks like he is ready to play today. Gameplay looks clean. For Nongshim Red Force, hard rotate up towards that north side. We've got dip in play, but not fully. At least we did confirm away from the south side. A lot of the water got cut out immediately. A hard shift over towards the northwest, and an easy rotate now for Tiamba to actually get in. There's Catch popping up in the Elim feed. Couple shots over towards the Furia squad. Furia that have been a little bit more shaky today in some of the battles we've seen. Hasn't been as cutthroat. See if that one results in a bit of a flush. Seems like they have grabbed Igor's back up for now, so he'll live on. Nongshim just ahead of the Aurora crew that have made their rotation over the bridge left of Novka. Oh, are they going in for this aggro? Aurora might be looking just to swing on the coastal side, deny as much sightlines as possible. Top though, playing an anchor
backstop here, taking some good shots. There is another play here alongside him with Doc. Mghz at distance, also watching, so this is a dangerous rotate here for Aurora, because even if they get down towards the beachhead, S2G might have a sightline with Mghz, and we know just how good Mghz is at distance. An eagle eye on him. Nades go through, but so easy, brushes them off. Dirt off the shoulder for so easy. Can't keep this man down right now. 3 of their nades invested, so draining some of the early offensive utility, but it looks like they've still got a good supply, at least on Doc, with 5 in the backpack. Meanwhile, E-Arena pushing trying to catch and escape. But it's not quick enough as Joker will adjust his crosshair and find that one on the exit. Mormon takes a knock back over. वो S2G का एक बंदा खा गया भाई ULA का एक ग्रेनेड से 2 Exit there from Ulf. Alula. भाई कवर जा रहे हैं सोलके की जानिब से Over towards the garages. R3B S2G भाई S2G cleans it up. Not a single player lost. Should be able to get that res. Nongshim Red Force in the meantime, after seeing those players leaving, did get that leapfrog on, so they get a little bit further into the circle here. Milta, not the main feature. If we go down towards the southeast, we know just how good Nongshim can be in an urban finish. Thriving in the concrete jungles. So no overcommit. Like you touched on, Aurora just controlling some of the rotation paths with the coast firmly under their foot. Map geometry favoring them from this position. They opt to go for the 2-2 split. Rufus and Top further over near the area we see Vitality starting to encroach upon. Whilst Joel and Doc, 2 players with very heavy hands, if you do want to challenge them in a raw duel, play off each other. It's actually a possibility right now with S2G leaving. I don't know if Aurora is able to spot that. They certainly don't see Mghz continuing to peak the angle, but now they have free capability to actually make an eastern ramp if they want. Right now they're holding two locations in terms of vision onto the map, but they are right on the edge, so eventually they'll have to move. I think likely what's going to happen is they'll wait for zone 4, make a decision from there how they want to rotate in. But there's a lot of free space over towards the eastern side, and already Doc is going to scout it. Yeah, that's exactly what I thought was going to happen. Get a little bit further up, realize that actually this space is kind of open at the moment for us to get a little bit more of an eye in towards the circle. That's the kind of premium real estate that man like Doc's going to instantly sniff out. He'll be confident enough to rep himself to take control of. We'll see how this pans out long term for Aurora. Next circle though. We're going to define a lot of how this works, and we are down towards Milta. Nongshim might be thinking about making a move right now, and then last game felt late on those rotates. It felt like they were still making decisions. This time they are much outside edge, not confirmed towards Milta yet. Still giving them capability to move out towards the field should this move towards the west. But now they're going to have a swivel on towards all the teams around them. Aurora recalling Rufus back towards the squad as teams start to surge towards Milta. Timing on this is going to be so dangerously tight, though. They all caught vision on one another. Ida have already entered close. 3-man split. Solo's playing in a line there for Aurora with the wrap in late. Rufus seeing the back line of Vitality knows he's got to go down towards the coast and then assist the team. Tiamba getting shots off as well. That's off. Oh, you're going to be eating shrapnel on this one. Wide arc down towards the roadside. Solus and Aaron here by the toll gates. It's always an awkward spot, very nadeable. Couple of positions you could play around inside the toll booth itself to try and dodge those close quarters ordnance. Oh my god, there's mollies everywhere. Move. He has to find an opening with this nade, but for Ulf it's looking like it's more and more over. XZY goes down to a nade from Rufus. Doesn't push it though. Should be resable. That's 2 players knocked as well. We saw Vitality getting the first domino falling onto Nongshim, then the assist coming in from Aurora. The Nongshim Smash squad might have come unstuck early.
It's far. It's so hard. तो grenade करा रहा है But भैंस पिटा. when the vehicle's currently slammed, it's really difficult to do. एक्सीडेंट हुआ है बच्चा है. Tizzy perched himself on the roof of the wall. Oh, that was close, Jackie. I think we just saw Federales get a single tap onto Hyunbin as well. He was looking for the drop with the smoke, wanted to try get down there and assist. Took a single bullet, had to hit the deck again. Thankfully, smoke's out, limited cover as well with the walls, so the geometry playing in their favor. You can go for another res. They might be able to recover it cleanly. अबे क्या जोन में आई है भाई? मतलब सरवाइव चाहिए. बहुत ही प्यारा गाइस. 40 की जाने से जोन में इन किया गया. विटाली की जाने से एनएफटी को नॉक किया जाएगा यहाँ पर. बहुत ही प्यारा. जी हाँ, निगमा गैलेक्सी के सेटअप को नॉक किया जाएगा. अरोरा सयोन की जाने से टियान का नॉक किया जाएगा. टियान मिली को भी नॉक किया जाएगा. ये की जाने से टियान की जाने से ये का प्लेयर नॉक. अरे अरे ये ऑल डेड कर दी भाई. टियान के 3 बंदे नॉक है. ये ऑल डेड. अरे वेल 2 एलिमिनेशन पॉइंट आ गए. 5वें नंबर पे आ गए अपन लोग. नाइस 40. आहिस्ता आहिस्ता बस. Other teams realizing there's been a lot of damage done here. It's a risky ये बचा रहे पूरी स्क्वाड को. वहाँ पे कोई पुश कर देना. ओए उसके मजे. With Jiggle getting one of them confirmed off the back of the damage that was done, so they do go down to at best a 3-man squad post this pickup. A lot of teams need to move. A lot of teams that औरा वाले इसके करीब ही है भाई, अकेला नहीं है. now feeling a little bad about this one, which is exactly why you see Aurora playing on this edge down towards the south side and Nongshim. 40 बस चिकन ले लो यार, चिकन ले लो प्लीज, मजा आ जाएगा. Got to extricate themselves. Flash have also got to pull themselves out of this one. S2G a little bit. S2G का पूरा स्क्वाड अलाइव है गाइस. औरा का पूरा स्क्वाड अलाइव है. फलक की जाता नॉक और फिनिश. ओह यस. फलक भाई. फलक ऑन टॉप. दिल खुश कर दिया यार फलक. बहुत ही प्यारा फलक. That backline in is good to at least take some of the heat off. Force attention. मैंने बोला तो है भाईजान रिश्वत खाई हुई है, नहीं दिखाएंगे. नहीं भाई ये चलता है सब चलता है. पैसा जितना वो कम है, हराम खो रही है. होती है बच्चे. हुदैफा गलत है भाई. हुदैफा अकेला बसा हुआ है हुदैफा. अल्लाह खैर करे. बस कोई देखे ना हुदैफा को. ये इसके पीछे है ना एनएफआईएन मिन के. वो उधर ड्रॉप के साथ है. वो नहीं होगी उसके बाद गाड़ी नहीं होगी जानी. बस ठीक है. खैर है. तुम लोग आपस में नहीं लड़ो, एंजॉय करो. हुदैफा एलिमिनेशन पॉइंट निकाले, बस मरे नहीं. ओ देख बे, ये विटैलिटी ने किल उठा लिया है निग्मा गैलेक्सी का. ओए हुदैफा को देख लिया. विटैलिटी ने हुदैफा को देख लिया. Vexi's been good as well at providing some overwatch for this squad. हुदैफा स्पॉट में आ गया है यार. अल्लाह खैर फरमाए. From either side, so a lot of information garnered towards them. They advance further. Silence and Co pushing up with the vehicles, going to peek over the top of the rocks. There's Tiamba in the distance. Nades being thrown onto Vitality. A backline potential. नहीं यार, हुदैफा ने मरना था इधर. बहुत बेचारा. कोई बात नहीं गाइस. 4-5's taking some damage as well. The pepper back onto there. Fury's going to move. यानी वो पहले का वो 14 उसने निकाला था. हाँ डॉग को. Alongside him now, and Vitality find themselves in a very horrendous position. Nades from Tiamba going a little bit wide here, trying to angle these through the smoke. ये ग्रेनेड चेक कर. वो खा गया भाई टियान. भाई 11 elimination. फलक नॉक. T24 नॉक. IQ के जाने से फ्यूरिया. T24 फिनिश. फलक ऑल डेड. 40 ऑल डेड. Furia shutting them down in the close range combat. And Nonshin, after turtling for so long, finally knowing Vitality had been taken out of the picture, they couldn't move. They're just wrapping around to where Aurora were.
हो गया भाई चिकन हो गया फ्यूरिया वाले अंदर only one player here in Reefer. Potentially they've noticed that there's actually a massive amount of space on this western side that they could clear. Tiamba's a 3-man, Furia's down to 2. Circle moves up that way, leaving Tiamba one of the few remaining positions, and we are on toll booth. Oh my god, what a circle to end on. Ooh, deep nades. Reefer's casting that one out. Back nades as he advances to try and create a little bit of space between the teams. Distant shots coming in from Tiamba. He's got to hit the deck. That's not the only squad you got to Aurora Reefers किया. From S2G gets a sight line. And goodbye Reefers. The only thing is S2G भाई S2G. Game where there is a massive capability of moving west on this one for Nongshim and clearing up towards that north side, having all that space. You'd imagine that they saw the amount of teams that moved into Milta. They are just charging headlong into danger here, where there is so much more room to play on the northwest side. Guys, you don't need elims. You need a chicken. And they might get barbecued if they take too much time on this one. Joel was cooking the molly. XCY so paranoid about the peak from the top side with Tiamba. And with Furia not needing to force the issue. नहीं कुछ कर सकता है भाई बोटी वाले bro. Last lane में चीज़ है भाई. It's so uncomfortable. Come back, lads. Just come back off this angle. We don't need to play it anymore. You can wrap back over towards. So easy. 2 down. What is this? It makes little sense. I mean, they'd set themselves up wonderfully the entire time for this western exit. And as soon as the circle moves away from Milton, and इसके सामने बीच रोड में स्नेक बना हुआ है. The panic's there. Paralysis by analysis. The zone takes away one of the members, and we're down to just a duo. Aurora caught on their exit. Aurora all dead, bhai. Be able to continue playing powerfully off this angle. XZY thankfully given a few moments of respite as he runs to try and find any cover at all. Mghz from S2G, we talked from the start of the game. They have just about hit that 122 now. So they have hit that smash ruling going towards that next match. Another team steps up to the plate. They've done enough here. Looking to take down Ida regardless. Oh! आईडी रीटा ने क्या मारा भाई? Stop! As always. S2G फिर बच गई. Standing straight and keeping S2G in a position to recover from this. S2G फिर बच गई. But a shutdown play that will let S2G fight on for another day. Flash though getting eaten alive by Hora. Dropping down the ridge, the nades bouncing in. Hora भी गुस्से में है यार. Kamikaze scanning to S2G भाई elimination point देख निकाल रही है. Top 2 पे आ गई S2G. Actually, Jackie. Looking to push themselves further in the rankings. Only 2 eliminations so far, but so much more to grab here as most teams are bruised and bleeding coming into these final zones. Tiamba also having a good time of it. भाई इधर तो काम बहुत खराब हुआ पड़े. Red Force rolling down, and we are directly on top of toll booth now. ओए NSA S2G सोल्जर को ले गया. XZY getting the tags off. They've been under constant pressure the entire time. It's not clean. It's awkward. Not even a helmet on so easy here anymore. Mate, you're playing with a bare minimum. Concessions had to be made, but a nade could be coming their way. Lost with 2 left in the back pocket. The first one thrown in looks good for them. ये grenade है भाई. ये finish वाला grenade है. Double bouncer. यार S2G. Comes to the end of his line there. बहुत ही प्यार. Nongshim is floundering at the moment. भाई S2G से कोई नहीं चिकन ले सकता भाई. ओले. ओले. Will get the backstab, but immediately spotted out by Lost here. S2G. 13 elimination point S2G. Enough, but they're looking to push further into this game, as is so easy. They're trying to send a message with this one. It's not just about what they needed to get into Smash. They want to prove that they can be the big dogs in the lobby. Response back over them. गया. Solve के गया. S2G कम का सारे गया भाई. गया S2G का squad. Last alive है. ये all dead.
ये ऑलरेडी भाई attack from Tiamba from way over the other side, and Tiamba keeping the pressure on, trying to get that pick up in, lost with limited वो रैप दे रहा है भाई in comes the nade. और इसी के साथ हो रहा Makes it work, and S2G go down. S2G blown sky high behind the tree there. यार S2G ने बहुत अच्छा खेला है यार अब हो रहा और टियान और ये एनएस का अकेला है So easy, with barely a hope in this match, but still hanging on. Furia dashed by the roadside, leaving just Hora, Tiamba, Nongshim Red Force in this endgame. For Nongshim, the best thing about this is that even if there isn't a smash win, अबे वो एनएस का भी अकेला बंदा है वो किसी को कैंसर देगा सख्त वाला It's going to be big for the placements. And is there a chance वही मैं तो of मैच sheer के shenanigans from So Easy? He's और crossing ये his देख fingers, mate. But you've got a एनएस का hard अकेला task बंदा earlier. अकेला बंदा वो पीछे बैठा हुआ है भाई कैंसर देगा किसी Just the peeks over a little bit. So Easy's trying to hide his face behind the barest of pylons, behind this railing. It is just not how. God, he has to do something. Oh, they've smoked him. Hang on a minute. और स्मोक का फायदा होगा उसको I really needed that. He's tucked in behind it. There's no real angle from the backside as well from Tiamba, so it just depends. I mean, if Hora go for the hard force over... This is mad. Yeah, this could get cheeky quite quickly. Sleepy would have burned down as well. The vehicle... ओ लैंगस दिया कैंसर इसने Tiamba assisting with the shots from the top. He's going to go first on these as well. Hora on the assist. ये हरामी But unreal. Smoke. आए करने दे Nades go in, nades go wide. आए Tiamba will clean up. कैंसर दिया भाई हो रहा वो Nonshin were looking to blot out the sun on that one with a surprise place, but it's not going to happen तो now. पुश जा रहा है भाई अब वो भी लंबी नहीं कर रहे ये करने दे आए ये But the nade goes over. Sky got a backpedal. Runs back to whatever cover he can find. Can he trust in his source on this one? Holding the peak, ready for एक लोग नहीं है Eagle gets knocked out of the sky. QZZ with a reposition. The Sky advances forward with a shotgun in his hand. Nade being cooked by Mghz. ये ग्रेनेड से क्या ये क्या भाई ग्रेनेड ही नहीं बंद होते यार टियान बहुत ही प्यारा चिकन टियाम्बा की जाने से गाइस What a fantastic game. नीचे वाली टीम चिकन लेके जा रही है 40 These guys needed a little bit of confidence. And that star on the match reinvigorates whatever light died out in Mghz on day 2. It is back on now and it is blaring. They started that game as they meant to proceed. The aggression was there. The despicable nade plays from Mghz that always give you that gut-wrenching feeling of how does he do it. Continued from start to finish. The shots are on point. And a pathway begins to present itself. Hora's got to be mad at themselves though. Imagine just smoking up So easy. The smoke into the tire pop on the career down the hill. Oh, but They really did careen off course there. Looked so good up until that point. Covering their angles, clearing their spots out. So easy. He was mega confused. I would have loved to see his face in that moment. Pure shock. He's like, is that the nade moved away from me? He's like, wait, actually. That's the smoke. I can pass that. Nice. That's great. I didn't have one of those before, you know? No utility left, but they gave him what to be nice. And then Tiamba with the perfect timed nades. Man. So good. There was a small part of me that thought that So Easy was going to clutch up. Small part of me. But I am glad it was Tiamba. Oh, yeah. Tiny percentage, but it started to get a little bit bigger with how things were going. But hey, a Tiamba win is a very exciting prospect. Such a fun team to watch, Blank, bringing the heat in finals. They're just a fast-paced team, and I think what we've seen them from before is just a little bit of that sluggish gameplay where they weren't quite able to make those plays, and they've been desperately banging on that door, but it's just been not going down. And I think Mghz right there just put a foot through it. So it looks good. It looks way better now. They're pulling off those maneuvers too. So yeah, great work to Tiamba. Really, really happy to see it. And it was, I think for me, it was fantastic to see these guys happy. Yeah. I think that was my favorite thing about that win.
It's nice to see him smiling, nice to see the success story of how they're playing. And mate, you're right. I think if there was a door there, Milu not only kicked it down, he just destroyed the entire house. He's just a whirlwind. Yeah. Came through, blowing everyone away. And mate, I'd love to see that. I hope that continues. I hope it does continue as well. For Tiamba, it's not over yet. We haven't rung the bell. They might have been uppercutted, but they have got back up again. The count did not finish. It's scary, no? Going into these final matches, we've got 3 teams at match point right now. It's S2G, E-Arena, as well as Nongshim. Nongshim's been making some crazy decisions. E-Arena, sadly, on the other hand, have just not been able to eke out those performances so far. It's felt a little bit timid from that team. S2G, though, I think this is a worrisome squad to have in that top 3 because they could just light it up at any moment now. Unless the pressure gets to him, which it seems to be the case for quite a few of our teams. Well, yeah, that's kind of the contrast we're painting there for E-Arena, right? Where it feels like you had some flash-in-the-pan moments, but now it's come to, you just got to follow through. It's not happening, whereas S2G, we know they can strive for greatness. It feels like championship mentality is going hand in hand with their aggression, the way they're approaching these lobbies. All it takes, one big game. Could be a championship right there. But stay tuned for that. We'll find out. The narrative continues. Do not go anywhere. Human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you. Gamers, hybrid workers, artists. Backing your every move. Fighting until we make it. These teams are in Tiamba, able to get that chicken dinner, full control of the zone. But we have to talk about something that's very important. S2G being able to get into the smash zone now, not coming up short this match. I mean, I just sort of want to touch on that. From their compound, they actually probably had the better position out of the squad, sort of moving that rotate in. But I mean, we got to talk about like their push on our Ula. I'm sure Max is going to cover this nicely a little bit later. But just the, I guess, raw power that they had from start to finish from that game, they were finally able to get over that threshold. Do I believe they should have done it in the first 2 games? A little bit, but that's okay. They've done it now, and obviously this is one of the teams that can take a victory. They definitely can take a victory. This is a team that has already gotten 3 wins in Erangel in the finals when we're talking about S2G. If we're looking at some of the other teams looking to get to that smash zone, it's none other than Aurora. I actually thought Aurora was going to be able to make it already. They're struggling a bit today, Max. Yeah, a bit of a weird hold onto Nongshim Red Force in particular, looking kind of weird. But by the way, I want to bring it back to S2G. They not only made
make it into the Smash Zone. They've got a 9-point lead on top of E-Arena, which if we do not get a Smash, is going back to the OG rules, which is the most amount of points becomes the champion. So right now, S2G are loving it, but so are Tiamba, shattering dreams in this game, eliminating E-Arena, eliminating the final player here at the very end for Nongshim Red Force, man. They are the reason why the tournament has not yet ended. Hora Esports back-to-back great games here out of them. And for Fourth Tribes Neptura, this team, after that rondo that we saw, they're starting to struggle. They ended up the first Erangel with a big old donut, and in this one, at least they secured 4 points. I mean, at least they do. I did see that they had a really fantastic rotation around from just massive wraparounds into Milta and then out of it. But yeah, 4 points is all they're going to get for that fantastic nades from Hora. Oh my goodness me. You were talking about it, right, Max? Sky is fantastic with the nades today. Really, really on point. And Tiamba, I mean, honestly, the word that I would use for both Tiamba and Hora, they're feeling very intense. You don't want to go up against them. Look at those sprays. Long range, through the smokes. There's no escaping this team. What are those sprays from QZZ? Oh my god. That was crazy stuff going out from him. I mean, he was just lasering everyone through the smokes. Incredible stuff. But at the end, Hora, another solid finish, right? Yes. Sure, maybe not chicken dinner, but it's a strong back-to-back, but so easy. In that smoke, actually, that was a smoke right from Hora Niptra. I thought maybe if he stays hidden, he could third-party it, but at the end, Tiamba put the nail in the coffin. That's something that I was actually hoping that So Easy was gonna do. He was gonna end up waiting a little bit longer, maybe use that smoke to his advantage. But Max, he didn't want to wait for that third-party option. He just wanted to take matters into their own hands. And it goes back to what we're saying with Nongshim. It feels like they're being passive, but they're not quite sure when to be aggressive and when to flip that switch. They are a little bit hesitant, right? And that's the thing about the Smash ruling. Love it or hate it, teams, the mindset does change a little bit when you do have that chance of getting those chicken dinners. It is quite stressful for now. Not just 2 teams, but 3 teams. S2G are going to be joining their ranks, but of course S2G got 3 chicken dinners so far in the final, so they're looking like a team that could actually wrap it up. But looking at the rotations this game in particular, I know you in particular, Niptra, were quite critical about their push on the western side of Milta. There were other options that maybe could have been more valuable. Absolutely. I think any... Oh, wait, hang on. Hold on. That's my clip right there. So looking at this split, so actually S2G, sorry, I have to jump into it. We're very split. Lost solo, literally in the 1v4. And even then, he's popping off, but he's also getting a bit of assistance from the teams on the other side of the road, right? His particular Kamikaze's got a fantastic angle. And there, the backup. This is literally the play that gets them into the Smash Zone. Solke going to be sending it forward. He's going to be joined up then by Habsajijuk, absolutely superhero style in the building. And they get 1, get 2, get 3, and the final player. And because of that, they get the 4-man reset and actually get enough points to enter the Smash Zone. What a hero save play of the day. They don't do that, they would still not be over that 122-point threshold. It's insane. I think I missed that play. Thank you for that replay, because oh my goodness me. So HamCG is just like crashing the wall. We are not going out. They just send it. Absolutely send it. And that's what we want to see out of some teams. Being able to send it. E-Arena, one team that's currently also running into that struggle when we talk about teams struggling that are already in the Smash Zone lace for E-Arena. That was Tiamba's fault. I don't know, like I have to bring it to Tiamba because obviously E-Arena, you know, they had a nice little path in there, but Tiamba were actually positioned in such a great spot that they were so annoying to every team. This is everybody. Aurora. This was obviously even helping S2G in that fight. They were able to sort of gatekeep that area from E-Arena as well. And so it's unfortunate that we're seeing like E-Arena not being able to push into the position early enough because they are still sort of playing that edge. They are going to be playing that edge, but right now they need to get that win if they want to be able to win via Smash Rule. They are one of those teams currently in the Smash Zone. Keep in mind, E-Arena started off the day with 112 points. They have only gotten 11 points so far after 3 matches. And 10 out of those 11 have been in Rondo. Because remember, they hit 122. That's where they were. In the last 2 games, they've gotten 1 point. What is happening to E-Arena? You're looking so strong. Yeah, transitioning to some of the other teams, right? I'm going to be looking at Fourth Tribes Esports. This is a team, Max, that we thought was going to continue on that momentum. Remember, this is a team that usually is able to carry on momentum. They're still hesitant. They're still showing those things that we've been critiquing this whole PMWC at EWC 26, which is hesitance at times. I was hoping they were not going to doubt themselves because they're not in the Smash Zone. Unlike what we saw in PMGO Season 1, where they were actually very stressed and Ulf almost were able to close a 50-point gap over the course of those 6 matches. But no, Fourth Thrives a bit shaken here. And actually, one play that you highlighted is that 3-1 split, right? You had Huzaifa on his own, 3 players in the city. That was a big of a head scratcher, right? Yeah. He was by himself. He was. Huzaifa was by himself. I could see maybe
maybe what they're trying to do is hedge their bets, but he was in such a difficult position, and it's a shame that he actually, when they actually wrapped around outside of the town as well to go back, Huzaifa ended up being taken out early, so that's a shame. As I'm looking at the teams here, all the way up to 11th place, 92 points. These teams are getting closer and closer. They're kind of giving a bit of an advantage there, since some of the teams towards the top are choking a little bit, are not being able to get that many points. For those teams on the second page, what that's going to be costing Neptura and Lays and Maxman, it's just going to be costing for all those teams to just get closer and closer. There's a lot of money at stake right now when we end up talking about some of these squads. Let's see what we have, some of the comments on social media as well. One chicken for 40, and then you see what's domination is. Yeah, but right now we're not seeing the domination. We want to see that domination from 4 Thrives, right? Yeah! Let's see if they'll be able to deliver for their fans here at the arena. But for some of the other teams, right, we're now talking about, let's go back to Hora, because Hora is stopping a lot of those teams towards the top from getting those points. The teams towards the top need to be able to find some kind of adjustment to that aggressiveness that we're seeing out of Hora. Yeah, them, Tiamba also, Hora in particular, they have nothing to lose, right? They're like, okay, we have to go hard or go home today. We have to initiate that comeback and leave the second page, which with the last 2 games on Erangel, they've been doing. We have one more Erangel coming up, right? So maybe we can finally see a Hora chicken dinner. That will be very exciting here in the finals of PMWC. But Tiamba, I feel like they're a team that in this lobby, if they get a knock and a flush on a player that's or E-Arena or Nongshim Red Force, and maybe now also S2G, they just fully capitalize on it. And I love it. They really are one of the few teams that are delaying this tournament until the very, very end. I mean, I sort of just want to bring your attention to foryou, because they are still sort of in that 90 points there. And from that previous game, they were holding the western side. Obviously, Hora was sort of taking out the rest of S2G. They did nothing. They didn't even rotate and swing around where Hora was, which would have capitalized their elimination. So they're kind of not being as present as they usually are. It could be ending here in this next match. My prediction was in 4 matches. How many matches did you have, Neptura? 4. Max? 4. Lace? I was hoping for 2, so mine's it. Okay, yours is absolutely good. But let's see if it's going to be ending here in match number 4, or if we're just going to be getting a bunch more teams joining in this match zone. Will this be it? We are about to find out. S2G joins the fray. Now 3 different squads could smash. 3 teams with that opportunity in our final edition of Erangel at the PMWC. It is going to go a little bit further than maybe some were expecting, given how today started, getting 2 teams into that smash zone so early on. But that double Milter shift on both of our zones has kind of thrown a spanner in the works. I mean, for Nongshim, right, they're dropping around that area, they're getting pushed in around the bridge. It seemed like they didn't quite have the force to be able to push their way out, right? They're still earning a lot of points on these games, though. So if it does go the full distance, they may just be able to win it out like that. That's what you got to do at the end of the day. Is you got to try to win this whole thing in as many different ways as possible. And that is going to be, you're going to smash, or you're going to end up with the most points on the leaderboards at the end of the day. And Nongshim Red Force with that double Milta circle, like you mentioned, is just putting in the work. Problem is, though, is that if we get another one, I mean, everyone's going to know by now exactly where they're at. So the focus is going to, I think, shift a little bit. But this could be the game where we get another crazy Erangel circle to finish out the PMWC here at EWC live in Paris. You can see these players cracking their knuckles, getting ready to drop in one last time. On Erangel, that will be the final bill. 3 teams, as you say before. Out of those 3, I feel like for my money, given today's games, I'm favoring either S2G or Nongshim Red Force. I feel like for me, E-Arena today has been solid, consistent, but not a game-winning team. And I need to see a little bit more from them to be confident in their ability to fully confirm on that smash. But we've seen them do some crazy stuff, right? They have broken records on their road here, and now they're in with a chance to take that title, give Schweppes his 3rd performance at a global level to get a global stage title with those 2 PMWI trophies already behind him, looking for a 3rd time to take it home.
Well, here comes the big one. We're here in Paris, folks. Let's make some noise as this is the last Airgale of the tournament. Could this be the final match? That's the question we're about to find out as we're looking now at the plane. These players are locked, loaded, ready to go. And we got one going right down the middle here in a nice diagonal coming from George all the way down to Novo. Yeah, going to give a lot of access to everywhere on the map here. Shouldn't be too many hot drops. I know we've seen a couple of those certainly earlier on. I mean, in our first Erangel, we had that hot drop over near the Gatka Fields that was a little bit questionable. Godlike not super happy about that, but there have been performances across the board here. Sorry, Ida. I think it was Ida and Tianbo actually who were on that hot drop earlier on, but still, yeah, a really tricky situation shouldn't be unfolding here this time around. Nobody dropping straight to North George, maybe just grabbing some vehicles and heading there later. Orangutan sending WizGod very far up north, isolated from the rest of the roster. Potentially, again, just grabbing a vehicle, gonna break out and rejoin in a moment. As we take a look at our top players, though, it's a three-way tie with Ulf, Nongshim Red Force, and Horror all having their representatives on our highest elimination counts. Oh! And it's a milli-circle. Let's go. I saw some people pop up in the stands after seeing that zone shift. Here we are in military. All right. Aurora are going to be down there. Nongshim Red Force are going to be close to this circle as well. Man, oh man, Airgale doesn't disappoint here. As, yeah, we had to just touch military just one more time, huh? Hey, we got to do it. We got to do it to them. Aurora already dropping there, obviously, could potentially have some fast rotates there. What we've seen as well from Nongshim Red Force is a lot of times where they've been able to transition very effectively over towards the military island. They've had 2 chicken dinners on 3 of their military island finishes, which is going to hopefully be something that they can repeat. That's what they're looking for here. So a big opportunity for Nongshim, who tends to go for the rotate of one player off of the shark fin, rotate down south fairly early on circles like this, try and get a foothold on the north side of the island and work from there. That's what they're going to be looking for. But if we've seen it, the other teams have seen it too. Yep. So is anyone going to try and counter that? Yeah, you know that these teams are prepared to their gills here. They know exactly what these teams are going to do. It's just, how are they going to execute it? That's going to be the question. Speaking of execution, if we look at the leaderboards right now, there are some teams that could still definitely win this whole tournament further down. I'm looking even all the way down to Team Flash, Aura, Furia, right? In my mind, though, it's getting to the point to where if they're going to win this thing, it's going to be via smash, right? And if they're going to smash, they have this game, and they have one more game to get within that threshold, okay? So if you look at Flash with 92 points, that's still quite a few away to get to that 122, but they have to do it in these next 2 games because you have to hit that threshold and then win the next game. Absolutely. I mean, from 12th down, I feel like it is pretty much done and dusted for the title, unfortunately. 74 points, putting you really, really far behind of that smash threshold. Unless everybody else in the entire lobby stops earning points and you just keep going on a points victory, maybe. But still, I'm not too sure about that one. So for 12th down, yeah, that's 48. I'm having a bad time thinking about their prospects moving on forwards, which is unfortunate. But there are opportunities for the rest of the lobby to keep that ball rolling. As you say, Flash really very much on an outside chance. I feel like anyone below 7th place is in that same boat, right? Having a really, really tough time, and even in 7th, 6th, and 5th to boot, it's going to be really rough. It will necessitate a chicken dinner in this match. Yep. To go across. This is that Nongshim Red Force rotate. Here they go. To tune in with our teams in the smash zone. Nongshim Red Force now across to the military island. S2G went very, very quickly, which makes me question how much loot they're going to have on board to try and hold this. Nongshim took a little bit longer to get across, which is going to give them some more power, some more backstop of utility of supplies. And Aurora, of course, dropping over in that military base. They're not in the smash zone just yet, but और कई टीमें इसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं. जितनी ज़्यादा टीमें मिलिट्री आइलैंड पर आएंगी उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें बनेंगी. अभी के लिए देखा जाए, आई थिंक वाला S2G अरोरा तो होती यहाँ पर है. 4th राइव्स, ईडा, नॉन्गशिम रेड फोर्स, 7 टीमें हमें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं. लेकिन निग्मा गैलेक्सी, क्या उनकी कोई फाइट बनती हुई दिखाई देगी?
क्या यहाँ पर एक ड्रॉप क्लैश होता हुआ, इनफैक्ट रोटेशन क्लैश होता हुआ दिखाई दे सकता है? जी हाँ, सामने ईडा है, पीछे टीम हेलो मलिक उबेंद्र दा, हाँ फारूक वेलकम हो गया। वो यहाँ पर गेट कीप करते हुए दिखाई नहीं देते। ब्रिज कैंप किया जाता तो एलिमिनेशन पॉइंट्स मिल सकते थे। राउफ की इन्फॉर्मेशन आएगी, 3 प्लेयर्स इस साइड पर गाड़ियां लेकर आते हैं, राउफ के ऊपर पुश करना चाहिए। राउफ और जब के टॉप 1 वाली वो स्प्रे डाउन करके ईडा के उन प्लेयर्स को भगा देते हैं। बाकी प्लेयर्स भी रीग्रुप करते हुए दिखाई देंगे निग्मा गैलेक्सी के। ईडा इस साइड पर आती तो निग्मा गैलेक्सी को प्रॉब्लम्स बन सकती थी, लेकिन चलो ईडा अब उनको भी मौका मिला है एक साथ फॉल बैक करने का। ऑल द पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए ईडा बहुत बुरी जगह पर दिखाई दे रही है, ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते। सर्कल मुझे लगता है कि वो वापस से शिफ्ट लेगा, सी बिल्डिंग की साइड पर आ सकता है, या फिर जिस तरह से एक्सट्रीम हमने सदर्न साइड पर शिफ्ट देखा, मोस्ट प्रोबेबली ये सर्कल हमें एक बार फिर से एक्सट्रीम सदर्न साइड का ही शिफ्ट लेकर जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे ही शिफ्ट लेता हुआ दिखाई देगा। बट चलें, S2G हमने उनको देखा, अभी तक की टीम शायद मेन आइलैंड पर, बल्कि नहीं, S2G तो रोटेट कर चुकी है और इनके आसपास ही कहीं ना कहीं हमें वाला स्पोर्ट्स भी दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, एंड S2G टाइमली रोटेशन उन्होंने अपनी कीनी बनाई है, लेकिन 2 और नाम अरीना वो अभी तक के लिए अपनी जगह मिलिट्री बेस में नहीं पहुंचा पाए हैं। NSR आई थिंक IQ अकेले ब्रो, मिलिट्री बेस एट द वेरी सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड 2 अदर टीमें स्मैश पॉइंट्स टारगेट पर जो है वो ऑलरेडी मिलिट्री बेस अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन S2G और 4 थ्राइव्स की शायद आपको एक फाइट हो गई फाइट दिखाई दे सकती है ब्रो, पुश आ गए जहां पर ये बहुत S2G ने घेर ली है 40 IQ को है, उनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है पोजीशंस का कि कहां के ऊपर टीम 4 IQ गया, लेकिन IQ अकेले मौजूद थे वहां पर। S2G के हाथों ये पहला एलिमिनेशन पॉइंट टीम 4 थ्राइव्स के ऊपर, और ये पहला एलिमिनेशन पॉइंट इस पूरे मैच का निकाला जाता है। लेकिन 4 थ्राइव्स इतने अच्छे पोजीशन पर रहकर फाइट के दौरान आपके पास वो ब्रीदिंग स्पेस था अपने प्लेयर्स को बुलाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो पाया। एंड IQ अब इस मैच के अंदर मजीद साथ ना निभा पाएंगे, लेकिन 4 थ्राइव्स के बाकी के प्लेयर्स वो भी फॉल बैक कर चुके हैं। 4 थ्राइव्स जो एग्रेसिव मोमेंटम उनको दिखाना है वो उसका आगाज़ उनको करना होगा, लेकिन अभी के लिए संभल कर, बहुत ज़्यादा संभल कर, क्योंकि एक और प्लेयर के एलिमिनेशन की गुंजाइश अब नहीं रही बाकी। गुंजाइश तो एक प्लेयर भी गंवाने की नहीं थी, बड़ा मैच निकालने के लिए आपको मेक श्योर करना था कि चारों प्लेयर्स इंटैक्ट रहते, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ IQ पकड़े जाते हैं। S2G उनकी तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ओवर एक्सटेंड किया गया सर्कल में, जहाँ पर ये नुकसानदेह साबित हो सकता था, बट उल्टा टीम 4 थ्राइव्स के लिए नुकसानदेह साबित होता है। एंड IQ वहाँ थोड़ा सा शायद पैनिक कर गए, बिकॉज अगर वो लेटे भी रहते तो शायद इन्हें स्पॉट ना किया जाता। देयर वाज नो व्हीकल इन फ्रंट ऑफ हिम, बड़े आराम से वो लेटे हुए थे, उनकी पोजीशन का अंदाजा S2G को था नहीं, बट जैसे खड़े हुए फ़ौरन से पकड़े जाते हैं और उनको लॉबी भेज दिया जाता है। चलें, 4 थ्राइव्स ये चीज़ फायर बैक करेगी, चक्कर निकालने में सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि आपका एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाए। बट देन इसी साइड पर वाइटैलिटी के प्लेयर्स भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने थोड़ा सा और आगे गए, 300 मीटर और 250-300 मीटर और आगे गए तो वहाँ पर 4 थ्राइव्स के साथ लड़ाई हो सकती है, लेकिन शायद यहीं रुकना चाहेंगे ये प्लेयर्स। दूसरी तरफ देखा जाए मैंशन के आउटस्कर्ट्स में एरेंगल के मैप का एक बड़ा ही खूबसूरत शॉट, और जहाँ जोन है वो जगह दिखाई दे रही है हमें। सर्कल का शिफ्ट कहाँ आएगा? आई रियली थिंक कि सदर्न साइड पर शिफ्ट ही आएगा, और शिफ्ट यहाँ पर सदर्न नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न आता है, जो कि वापस से टीमों को मजबूर करेगा कि वो थोड़ा सा जरा सी बिल्डिंग साइड पर है, और ये सर्कल इंडिकेशन तो दे रहा है कि सी साइड पर ही जाता हुआ खत्म होता हुआ दिखाई देगा, बट कैन गो आइदर वेज। इससे पहले हमने कई सर्कल मिलिट्री बेस के जब देखे हैं तो वो अबैंडन जो प्लेन्स हैं उसी साइड पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस साइड पर फॉर्चुनेटली ना 4 थ्राइव्स मौजूद है। मेन आइलैंड की बात करें वहाँ पर OG भी है, फ्लैश भी उनके बिल्कुल सामने है। OG वर्सेस फ्लैश फाइट लिए बगैर दोनों टीमें ही आगे नहीं जा सकती, शायद फ्लैश चली जाए लेकिन OG नहीं जा सकती। जी हाँ बिल्कुल, एंड वहीं पर ओरंगुटान्स फाइट तो लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड शायद ओरंगुटान्स वो सर्कल के अंदर जाने से ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट शायद आप उतने मिलिट्री सर्कल्स के अंदर ना कंफर्म कर पाए अपने लिए, लेकिन हाँ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं, एंड वही करने के लिए ओरंगुटान्स फ्लैश को एलिमिनेट करना चाहते हैं। बट खैर अभी के लिए इस फाइट को क्या आगे बढ़ाएगी ओरंगुटान्स, या आगे सर्कल को तरजीह देकर रोटेट करते दिखाई देंगे? अभी के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट करते देखने को मिल रहे हैं अपने फॉर्मेशंस के ऊपर, लेकिन ओरंगुटान्स पीछे रहते कुछ शॉट्स भी दाग रहे हैं, मजीद
मजीद जो टीमें रोटेट करना चाह रही हैं सर्कल के जानिब, लेकिन ओरंगुटान्स के साथ ही साथ अभी भी हो रहा स्पोर्ट्स भी उसी सारे साइड से मिल्टा के नज़दीक से गुजरते आपको देखने को मिलेंगे एंड वो भी नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक के लिए सर्कल के अंदर। लेकिन सही है मरेंगे सारे एलिमिनेशन फीड में अबे मरेंगे 4 4D मेरे को गिराया पता है। जाता है। अभी फिलहाल के लिए नॉकआउट थे, लेकिन अब एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, T24 भी गया। तीसरे प्लेयर भी एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे चंद ही सेकंड्स के अंदर। T24 वर्सेस टीम अरोरा सेओल, ये एक फाइट बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन T24 जहां ग्रेनेड फेंका गया वहां स्प्रेज आते हैं। T24 वो मोलोटॉव में चले जाएंगे एंड फोर्थ राइव्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टीम जो कि लॉबी जाती हुई दिखाई दे, बिकॉज आखिरी प्लेयर हैं फलक जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। इससे पहले हमने बाकी प्लेयर्स को इससे पहले हमने देखा कि फलक सबसे पहले लॉबी जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाकी 3 प्लेयर्स चले जाते हैं और सिर्फ फलक बचे हुए हैं। अगर आप देखें तो एक लिहाज से पूरी लॉबी जिंदा है, सिर्फ फोर्थ राइव्स ही ऐसी टीम है जो कि लॉबी जाती हुई दिखाई दे रही है। और चलें, फलक कितनी देर तक वो सोलो सर्वाइवल देखने को मिलेगा? वो जो ख्वाब थे #2 बनाने के, वो थोड़ी देर के लिए चकनाचूर तो हुए हैं, बिकॉज एक अकेले प्लेयर का सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है इस लॉबी में, लेट अलोन के वो 15 पॉइंट्स निकाले या अकेला प्लेयर जो है वो चिकन डिनर दिलाए। मुश्किल तो है, बट क्या फलक वो अनएक्सपेक्टेड, वो ऐसी चीज़, वो ऐसा ख्वाब जो कि किसी भी सोलो प्लेयर का होता है, वो पूरा कर पाएंगे या नहीं जाएंगे, एक सवाल है। वहीं पर दूसरी साइड पर फ्लैश वर्सेस ओरंगुटान दोनों आमने सामने हैं। फ्लैश यहाँ गेट कीप करती हुई ब्रिज कैंप लगाती हुई नजर आ रही है। नहीं चल रहा, उमर सोचना पड़ेगा, अंदाजा है चल नहीं रहा है, आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जितनी देर तक बहुत दिखेंगे यार उतना ही इधर डैमेज भाई पड़ेगा। 14 पीछे से दिल ओरा दुखाया और ट्याम्बा भी आते हुए दिखाई स्टोरी वालों को लोकेशन पता है, वो यकिया लगाएंगे डाल के फलक के साथ। एंड सर्कल एक शिफ्ट कहा कर मेरा जाता स्क्वाड है। इनका लाइव होना चाहिए था इसकी वजह मैं से। ये चीज़ सिर्फ आई अकेला एम नॉट फलक, एट द पोजीशन ऑफ सेइंग कुछ दिस, नहीं बट बोल मैंने सकता, जो एक कुछ चीज़ भी। कल के दिन से फाइनल्स डे 1 में भी हाईलाइट की थी, एक ट्रेंड शिफ्ट जो टीम फोर्थ राइव्स ने फाइनल्स में किया है, इसके बलास 2 मैचेस है, दोनों प्रेफरिंग मेरा अमर किया है। द सर्कल सेंटर। उनकी कोशिश होती है कि हम जैसे तैसे कर कर सर्कल के सेंटर के करीब चले जाएं, और ये अभी जो प्लेन क्रैश साइड पर टीम फोर्थ राइव्स का एजेस से उठकर जाना, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। कल के दिन भी फेरी पियर्स के अंदर जहाँ पर टीम फोर्थ राइव्स एलिमिनेट हुई थी आकर प्राइमॉर्क से निकलकर, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। टीम फोर्थ राइव्स नेचुरली एजेस पर रहकर एलिमिनेशंस उठाती आपको दिखाई देती है, और ये उनका गेम स्टाइल है, उनका नेचुरल गेम स्टाइल ही यही है कि एजेस पर रहो, एलिमिनेशंस उठाओ और अपनी जगह एजेस से करते चलते एंड सर्कल्स के अंदर बनाओ। तब तक उनके पास अच्छे खासे एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। थर्ड पार्टीज़ की सूरत में, गेट कीप्स की सूरत में, सेंटर वाला जो एक गेम है वो टीम फोर्थ राइव्स का नेचुरल गेम स्टाइल नहीं है। और जैसे ही टीम फोर्थ राइव्स अपने नेचुरल गेम स्टाइल से, ये मुझे लगा, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो नेचुरल से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बात आप कर रहे हैं उसको साइड पे रखकर अगर एक टीम को सर्कल का सेंटर मिल रहा है तो वो क्यों ना ले? मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। लेकिन चलें गॉडल की बात करें, वो फाइट में आते हुए दिखाई देंगे। ये एरिना वर्सेस गॉडल चलता हुआ नजर आता है, जहां पर एक साइड पर वाइटैलिटी वर्सेस नॉन्गशिम रेड फोर्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स आई थिंक चांसेस है रिवाइवल देने के। अबैंडन टैंक एरिया है जहां पर ये टीम मौजूद है, इनके पास एक रिज है, बड़ी अच्छी रिज है, यहाँ पर पुश करना इतना आसान नहीं होता, यहाँ पर स्लैमिन देना आसान नहीं होता। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके एक प्लेयर के पास वो हवरक्राफ्ट मौजूद है जिसका वो बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नॉन्गशिम रेड फोर्स एज सच ज़्यादा को प्रॉब्लम्स उनको आने नहीं वाली, बड़े आराम से खेलेंगे। पॉसिबिलिटी है कि इस मैच को खत्म करने के बाद, चिकन डिनर लेने के बाद स्मैश रूल पॉइंट से जीता जाए, लेकिन गॉड लाइक कैसे आएंगे सर्कल में? ऑल दो एजेस पे मौजूद तो हैं, लेकिन अगला सर्कल उनको अबैंडन करेगा। ई एरिना वर्सेस गॉडल, ये फाइट बनती हुई दिखाई दे सकती है। ई एरिना के पास और कोई चारा नहीं है, उनको गॉडल से फाइट ही लेनी आदि, वरना सर्कल में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन टीम ई एरिना यहाँ से फॉल बैक कर रही है, क्या प्लान रहेगा उनका? जिस साइड पर वो जा रहे हैं वहां से त्याम्बा आ रही है, त्याम्बा को लग रहा है कि ये ब्रिज नहीं दूसरा ठीक है, ई एरिना को लग रहा है कि वो ब्रिज नहीं है ठीक है। चलें, त्याम्बा फिलहाल के लिए जिस साइड पर जा रही है वहां पर ओजी के प्लेयर्स हैं, त्याम्बा वर्सेस ओजी भी दिखाई दे सकता होता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, एंड ओजी वो जान कर यहाँ पर रुके हुए हैं। इनफैक्ट ओजी को भी आगे गेट कीप किया जा रहा है फ्लैश की साइड से। मुझे ऐसे लगा कि शायद ओजी इंतज़ार करना चाहती है और मतलब बाकियों का गेम ख़राब करना चाहते हैं वो यहाँ पर रुककर, बट ऐसा नहीं है, उनको ख़ुद को भी गेट कीप किया जा रहा है। और ये देखें ये सर्कल शिफ्ट सबसे बड़ी मिसाल है। फलक जहाँ से सर्कल के अंदर जा रहे हैं, एजेस पर रहकर खेलने का आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन खैर
जो हो चुका स्टोरीज है, के होंगे अब फलक देखते के। हैं ये मैच क्या लेकर के आता है, क्या कंपटीशन इख्तिताम को पहुंचने वाला है, क्या कोई चैंपियन 3 में से कोई एक टीम की सूरत में हमें बनता दिखाई देगा। थोड़े आंसू फलक जरूर को आ रहे हैं फॉलो लेकिन करना कोई पड़ेगा। बात नहीं है, वी आर इन द टॉप 5। पिछले साल हमने टॉप 7 के अंदर ख़त्म किया था, इस साल हम टॉप 5 के अंदर हैं और ये साल ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतर भी गया है। मैं अपनी टीम को बिल्कुल इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि दे आर द चैम्प, दे हैव बिन द चैम्पियंस। लेकिन खैर हम लोगों को सारों को सपोर्टिव ज़रूर रहना है, बट वहीं पर कुछ प्ले जोन से एलिमिनेशंस निकलते देखने को मिल रहे हैं। होरा स्पोर्ट्स के नो फेयर एक लीप ऑफ फेथ लिया उन्होंने, बट हाँ इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि 1500 मीटर दूर जाना था। ब्लू जोन काफ़ी अरसे का यहाँ पर मौजूद है एंड होरा स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर अभी भी जाते जाते जान मारना चाहते हैं कि शायद एक दो वो जो एलिमिनेशन पॉइंट्स है ब्रिज पर रहकर वो निकाले जाएं, लेकिन ई अरीना अभी तक अपनी जगह सर्कल के अंदर नहीं बना पाई है। फैंस शेयर अप कर रहे हैं अपनी फेवरेट टीम्स के लिए और फैंस को भी अंदाज़ा है कि S2G, ई अरीना, नॉन्गशिम रेड फोर्स तीनों में से कोई एक टीम इस मैच के अख्ताम के ऊपर बन सकती है एक पॉसिबल चैंपियन इस सारे PUBG मोबाइल स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की। लेकिन वहीं पर ओजी के आतंकी अनफॉर्चुनेटली ही गेट्स एलिमिनेटेड एंड ओजी के विजगॉड आखिरी प्लेयर रह जाएंगे। जाते जाते एक और एलिमिनेशन पॉइंट अगर कंफर्म कर लिया, पैन पर बुलेट्स लगती हैं। यही बुलेट्स अगर पैन ना होता जान बचाने के लिए तो शायद हमें ओजी के ये आखिरी प्लेयर भी बाहर जाते दिखाई दे सकते थे। लेकिन निग्मा गैलेक्सी उनकी एक फाइट शुरू होगी, फोरिया एलिमिनेशन पॉइंट उठाते हैं निग्मा गैलेक्सी के रऊफ के ऊपर एंड निग्मा गैलेक्सी अभी के लिए उस तरह से आउटशाइन नहीं कर पाई है जिस तरह का आगाज फाइनल्स के अंदर ये टीम लेकर गई थी। टॉप स्पॉट से जब गिरे तो इतना नीचे चले गए कि अब 7वें नंबर पर ये टीम हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी के साथ साथ देखा जाए टीम ई अरीना की बात करें, सर्कल में रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं। 3 प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, एक ही प्लेयर गवाया। गॉडल ऑन द अदर साइड उल्फ के हाथों अपने प्लेयर्स गवाती हुई नजर आती है। रंगडन अपने आखिरी प्लेयर मौजूद है, सर्कल में जाना चाहेंगे लेकिन क्या सर्कल में जा पाएंगे? 1000 मीटर 1100 मीटर का वो लंबा रोटेशन उनको तय करना है जहाँ डैमेज जोन का बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हाथ में किट्स रहना, बैंडेजेस रहना, ड्रिंक्स रहना ये बहुत ज़रूरी है। ई अरीना शायद ये मैच निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज जहां से भी एंट्री लेंगे वहां कोई ना कोई टीम होगी। लेकिन फलक अकेले प्लेयर गॉडल के प्लेयर्स के सामने आते हैं। पहला प्लेयर गिरा दिया जाएगा फलक की जानिब से, लेकिन ये आखिरी प्लेयर इकलौता प्लेयर क्या करेगा? क्या सारे गॉडल के प्लेयर्स को एलिमिनेट करता हुआ दिखाई देगा? फलक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं साइड के ऊपर। यहाँ देखा जाए फ्लैश भी थर्ड पार्टी होती हुई दिखाई देगी। एक साइड पे उनके फरिया है, एक साइड पे नॉन्गशिम रेड फोर्स, लेकिन फ्लैश जाने से पहले एक या दो एलिमिनेशन पॉइंट्स नॉन्गशिम रेड फोर्स के ऊपर कंफर्म किए तो उनकी उम्मीद इस मैच को जीत पाने की, ट्रॉफी को जीत पाने की खत्म हो सकती है। लेकिन वापस से फोर्थ मैच की तरफ जाने देखा जाए फलक उनकी एचपी लो होती हुई नजर आती है, यानी कि टीम गॉडल वो भी रिटेलिएशन करती हुई पता है क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता। देखना पड़ेगा अभी। यार मेरा इंटरनेट यार स्लो हो गया। उमर मेरा इंटरनेट। लेकिन ओजी के प्लेयर विजगॉड वहां से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे कर सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कम फ्लाई विद मी चीट कोड लगाया जाएगा उनकी साइड से, बच ना पाएंगे। ई अरीना या तक आए तो इनफैक्ट लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस दी जरूर जाती है। लेकिन ओरंगुटान्स में फिर भी उनको दाद दूंगा इस चीज़ के लिए कि कोशिश उन्होंने की कि जैसे तैसे कर सर्वाइवल की नहीं बनाया जाए। एंड ई अरीना उनको भी दाद देना बनती है कि वो यहाँ तक आए हैं, अपनी सर्कल में जगह बनाई है, लेकिन आते साथ ही उनके प्लेयर्स को पकड़ लिया जाएगा अरोरा की साइड से। अरोरा और विटालिटी छीनते दिखाई देते हैं, लेकिन अरोरा जिनको चाहिए मजीद कुछ और पॉइंट्स मैच पॉइंट टारगेट तक जाने के लिए, लेकिन अरोरा कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो आपको गिरता दिखाई देगा क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि शायद इस मैच के बाद ही हमें चैंपियन बनता दिखाई दे पेरिस में साल के PUBG मोबाइल स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का। लेकिन वहीं पर एनएसआर बहुत ज्यादा पैसिव अब आपको खेलती दिखाई दे रही है। नॉन्गशिम रेड फोर्स सर्कल से बाहर है एंड सर्कल के अंदर जाने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 मुख्तलिफ टीमों से गुजर कर उनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कि जो प्रेशर एनएसआर के
प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से बज़ाहिरी तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसका सामना किस तरह से एनएसआर करती दिखाई देगी। अगर मिनी मैप देखें आप तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। फोर्थ रेस के चारों प्लेयर्स होते हैं, I'm 100% श्योर कि चिकन डिनर उनका ही था, लेकिन फिलहाल ये अरीना उनकी बात करें अपने 2 प्लेयर्स को लिए हुए आगे आते हुए दिखाई देते हैं। नॉन्गशिम रेड फोर्स एंड फ्लैश की फाइट बनेगी, जहां पर फ्लैश के प्लेयर्स अभी तक कोई नॉकडाउन निकाल नहीं पाए। बाउस के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, गाड़ी लेकर आगे पुश किया जाता है। XZY वो स्प्रे डाउन करेंगे। बाउस इज द लास्ट वन स्टैंडिंग इन बाउस ले लिया भाई ये फेल को। द एग्रेशन ऑफ टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स, लेकिन पीछे से निग्मा गैलेक्सी NGX वालों ने थर्ड पार्टी जाएंगे। चल क्या रहा है, सेंटना के आएंगे। वर्ल्ड शेकडाउन अनादर नॉन्गशिम रेड फोर्स गेट्स एलिमिनेटेड। व्हाट अबे बीच में 10 मिनट एंट्री मारी है यार सतन ने। What just happened? निगमा गैलेक्सी के 2 प्लेयर्स आते हैं, पूरी टीम खा जाते हैं। इस सेटन जिनके खाते में एलिमिनेशन पॉइंट्स दर्ज होंगे। ये रिस्क लिया निगमा गैलेक्सी ने, लेकिन रिस्क के बदले उनको रिस्क मिल जाता है। 2 प्लेयर्स आए, पूरा स्क्वाड मार दिया यार, ये कैसे हो गया? Oh my God. देखिए कि डर कर खेलने का नतीजा क्या होता है। एनएसआर उनके प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर था। होता है ऐसा, ये पहला पायदान EWC के ग्रैंड फाइनल्स का, ये संभालना ही बहुत बड़े बड़े नाम चूक जाते हैं इसको संभालने के लिए। लेकिन निग्मा गैलेक्सी निग्मा गैलेक्सी जो ख्वाब एनएसआर लेकिन निग्मा गैलेक्सी ऐसे लगा कि शायद इस मैच में उनकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, जाएंगे सीधा और पहले नंबर को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद अपनी जान की बाजी लड़ते आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से फॉलो करेंगे, घोड़े पर बैठकर छलांग भी लगाई जाएगी उनकी साइड से। लेकिन पीछे से कुछ बुलेट्स आएंगे, फिर छलांग लगाई जाएगी, बच जाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए फलक इज सर्वाइविंग। पीछे से गॉडल के प्लेयर्स को देखते जरूर हैं। फलक अपनी क्रॉसेस बनाएंगे, आखिरों को पकड़ा जाएगा। एलिमिनेशन फलक का यहां से सर्वाइव, ये विटालिटी ने पेश की है। यहां से एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म अपने लिए कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन असल सवाल अबे फलक अभी का ये है कि क्या ये कंपटीशन इस मैच के बाद इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। द टॉप 9 टीम सर्वाइविंग इन दिस गेम आपके सामने आ चुकी हैं खवातीन और हज़रात, जिसमें से नाम एसटीजी का है जो वो काम कर जा सकते हैं। जो कोई भी नहीं होते देखना चाहता है सारे लॉबी में, तो 4 टीमें जो है ना ऊपर वाली को मार जाए और उससे नीचे कोई भी चिकन कर ले। वो सुसाइड मूव, वो गट्स जो निग्मा गैलेक्सी ने दिखाए थे, क्या S2G के खिलाफ कोई दिखा पाएगा? आइए जानते हैं। अभी के लिए S2G अपने चारों के चारों प्लेयर्स पर इंटैक्ट है। ओए होए ईरे के साथ क्या हुआ है? इंटैक्ट है, अरोरा के प्लेयर्स भी यहां मौजूद पर ठीक है, 2 टीम में S2G और अरोरा। S2G और अरोरा मर जाए बात टाइट है। सबसे बड़ा सवाल ये है आज के दिन का ताजा फलक ने कमाल की है, 2 एलिमिनेशन पॉइंट लेके गया भाई। फर्स्ट स्पॉट हासिल कर पाएगी, चैंपियनशिप लेकर जाएगी, ट्रॉफी उठाएगी। क्या वापस S2G का वो एरा जो हमने इससे पहले ग्लोबल चैंपियनशिप में एक टाइम में देखा था, क्या वो वापस से आता हुआ दिखाई देता है? लेकिन अरोरा उनका S2G के करीब आना, अरोरा को जरा सी भनक पड़ गई कि S2G है तो वो बिल्कुल भी रुकने नहीं वाले। वो यहाँ एग्रेसिव होंगे, यकीनी तौर पे उनकी तरफ से एक भी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया। दे विल जस्ट स्लैम इट। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अलादीन S2G टॉप 9 में से टॉप 6 के अंदर अपनी जगह बना चुकी है। एंड S2G का एक पायदान ऊपर आना इस मैच के मैच रैंकिंग्स में ये चीज़ दिक्कतें बनाएगा। टॉप 5 के अंदर टीम S2G ख़वातीन व हज़रात अपना नाम दर्ज कर चुकी है। लेकिन S2G इज़ नॉट दी ओनली टीम जिनके चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। अरोरा के 4 प्लेयर्स हैं। अरोरा बेशक आपको मैच पॉइंट पर जाती दिखाई देगी, स्मैश रूल पॉइंट्स के जो टारगेट हैं 122 पॉइंट्स अबूर करती इस मैच के अख्ताम पर दिखाई देगी बड़ी आसानी से। लेकिन वहीं पर फोरिया वो अपने 2 प्लेयर्स पर हैं। विटालिटी वो अपने चारों के चारों प्लेयर्स और 5 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर हैं। लेकिन अरोरा गेमिंग के प्लेयर्स बिल्कुल रिज के अतराफ स्काउट करते दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबली शायद आने वाली फाइट S2G के खिलाफ अरोरा की ही बनती आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन S2G अगर उन्होंने अरोरा को इस मैच से बाहर कर दिया तो उनके चिकन डिनर करने के चांसेस मजीद आपको बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन अरोरा के प्लेयर गॉडल के एस पावर को स्पॉट डाउन करते हैं। एस पावर गेट्स एलिमिनेटेड एंड वहीं पर विटालिटी के प्लेयर पीछे से कहीं से डॉग को स्पॉट डाउन करने में कामयाबी हासिल करेंगे, बच जाएंगे जैसे तैसे कर अरोरा के प्लेयर। लेकिन वहीं पर क्या होगा इख्तिताम इस मैच का? सबसे बड़ा ये सवाल जो सभी के दिल में गूंज रहा है, जो सभी सोच रहे हैं क्या वो S2G इस साल की हमें E-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती दिखाई देगी? ये मैच सभी कुछ है टीम S2G के लिए, क्योंकि बड़ी जान लगती है। एनएसआर को हमने देखा कि वो प्रेशर
संभाल ही ना पाए इस मैच में सर्वाइव करने का। लेकिन S2G यहाँ पर आए हैं अपने चारों के चारों खिलाड़ियों को लेकर के। वहीं पर विटालिटी के प्लेयर्स अभी के लिए अपने आप को रीसेट करते दिखाई देते हैं। अरोरा और विटालिटी की अगर फाइट हुई फिर तो पक्का बहुत चांसेस हैं टीम S2G इस मैच का शायद चिकन डिनर निकाल कर लेकर चली जाए। लेकिन S2G की अगर पहले फाइट बन गई जैसे तैसे कर तो शायद S2G के खिलाड़ी आपको कुछ एलिमिनेट होते दिखाई दे सकते हैं। बहुत ही नाजुक सूरत हाल बन चुकी है अब आकर। बिल्कुल नाजुक सूरत हाल तो बन ही जाएगी। अरोरा गेमिंग यहाँ मौजूद है, S2G मौजूद है, S2G को एलिमिनेट कर दिया अरोरा गेमिंग ने, तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन वाइटालिटी का अरोरा के पास आना, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों टीमें आपस में लचती हुई दिखाई देंगी। S2G इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कितना करीब आ चुके हैं वो ट्रॉफी उठाने के। उनको सिर्फ सामने मौजूद 3 टीमों को एलिमिनेट करना है, उनको सिर्फ 2 टीमों को आपस में लड़ने देना है, चारों प्लेयर्स इंटैक्ट रखने हैं। इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा करीब कोई अब तक ट्रॉफी के आया नहीं है जितना करीब इस मैच में S2G आ चुकी है। लास्ट मैच में नॉन्गशम रेड फोर्स को देखा लेकिन उनके पास जगह अच्छी मौजूद नहीं थी। यहाँ पर टीम S2G की बात करें, उनके पास जगह अच्छी मौजूद तो है, लेकिन इस बार हो जाएगी फाइट अरोरा वर्सेस वाइटालिटी। दोनों टीमों के माबैन ये फाइट होती हुई दिखाई देती है, जहां S2G थर्ड पार्टी करना चाहेगी। S2G को रियलाइज करना है कि एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना मकसद नहीं होना चाहिए। Your focus should be getting a chicken dinner। और अगर आपने ऐसा कर दिया, you will be crowned as the champion of esports world cup। और ये पहला एस्टर इवेंट होगा जो कि हमें स्मैश रूल की बदौलत खत्म होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वाइटालिटी वो स्पॉट करते हुए दिखाई देते हैं। फोरिया के प्लेयर को काफी लो HP किया जाता है। फोरिया भी इसी साइड पर आएगी। 3 टीमें आपस में लड़ रही हैं, चौथी टीम उन तीनों से दूर है और उसी टीम को सर्वाइव करना है, उसी टीम को निकालना है वो चिकन डिनर। लेकिन वाइटालिटी फंसते हुए दिखाई देंगे। एक साइड से फोरिया, एक साइड से अरोरा, सामने से टीम S2G वो चैलेंज करना चाहेंगे वाइटालिटी का। एक और चैलेंजर आउट ऑफ द पिक्चर होता हुआ दिखाई देगा वाइटालिटी की जानिब से। नॉकआउट दर्ज करने की कोशिश, लेकिन उनके प्लेयर भी गिरते हुए दिखाई देंगे। S2G सारी फाइट में थर्ड पार्टी करेगी। वाइटालिटी फुरिया को पार करना चाहती है। अयाला इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर, लेकिन जोन के बाहर जाते हुए शायद अयाला दिखाई देंगे। एक साइड पर कामिकाज़े है, दूसरी साइड पर दिखाई देंगे टीम फुरिया के प्लेयर्स के, वाइटालिटी के प्लेयर। लेकिन अरोरा आगे आती है, अरोरा के प्लेयर्स गिर जाएंगे। आदि मुझे क्यों लग रहा है कि दिस इज इट। कम ऑन अरोरा, मुझे क्यों लग रहा है कि दिस इज इट। मुझे लगता है थर्ड पार्टी करेगी टीम विटालिटी S2G के खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन हाई ग्राउंड एडवांटेज का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए S2G आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अरोरा अब वो बहुत ज़्यादा पिंच्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन कुछ फायर्स दागे जाते हैं विटालिटी के प्लेयर्स की साइड से। S2G के लॉस को पकड़ लिया जाएगा। अगर ये रिवाइवल मुकम्मल ना हुआ तो शायद इम्कान गिरता आपको दिखाई दे सकता है। S2G के इस मैच के चिकन लेके जाने के लिए एक ही तीर से 2 द शिकार डॉक आएंगे निकल कर सामने, चट्टान बन जाते हैं। ट्रॉफी और S2G के बीच में वो दीवार बन जाते हैं। टीम अरोरा के डॉक एंड S2G का वो ख्वाब सिर्फ एक ही स्प्रे की मानिंद आपको टूटता इस मैच के अंदर दिखाई देता है। लेकिन आखिरी प्लेयर के ऊपर S2G अब आपको आते दिखाई दे रहे हैं कामिकाज़ी। अब आप देखें वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा जो S2G के प्लेयर्स के अंदर बरकरार था वो टूट चुका है। और अरोरा के डॉक को इसका क्रेडिट जाता जरूर है, लेकिन अरोरा ई-स्पोर्ट्स अब वो भी अपना नाम उस सारी फहरिस्त के अंदर दर्ज कर दिया जा चुका है। उनकी साइड से आने वाले मैचेस के अंदर चिकन डिनर अगर निकाल लिया अरोरा ने तो वो चैंपियंस आपको बनते दिखाई देंगे। लेकिन S2G के कामिकाज़ी क्या जाते जाते कुछ कर पाएंगे? अभी आइए जानते हैं। अरोरा के प्लेयर रीफच अपना व्हीकल लेकर के आगे बढ़ेंगे। कामिकाज़ी स्प्रे डाउन करने की कोशिश करते, लेकिन अरोरा लेंगे S2G को इस मैच से और अरोरा का चिकन एंड चिकन डिनर अरोरा का चिकन अरोरा की साइड से जो आ चुके हैं स्मैश पॉइंट्स टारगेट से भी कहीं ज्यादा ऊपर, लेकिन चैंपियंस बनते बनते रह गए एक कदम दूर। वो ये चिकन होता ना, इनको वो विनर हो जाना था ना इन्होंने। हाँ वो वाला पॉइंट जीत गया। बस सोचें इस बारे में कि अरोरा जीत गया, लेकिन स्मैश पॉइंट नहीं उनको मिलेगा। अगर नॉक ना होते S2G ट्रॉफी जीत जाती। इतना ज्यादा पैनिक करेंगे वो इस मोमेंट के बाद, कितना ज्यादा प्रेशर आएगा। दे आर नॉट गोना, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे सबसे। S2G सबसे रिकवर करने वाली नहीं है, वो अब नहीं जीत पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। It's very difficult now। आप सोचें कि they were so close to the trophy कि उनके अपने ही प्लेयर लॉस्ट आगे जाकर नॉक हो जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए 2 प्लेयर्स आते हैं, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। S2G उनके साथ डे लाइट के अंदर रॉबरी होने वाली है and it is going to be अरोरा जो कि ऐसा कर सकती है। ऑल्दो बाकी टीमें भी हैं, लेकिन अरोरा अब वो इतना करीब आ चुके हैं,
खुशबू आ रही है उनको दूर से ट्रॉफी की। S2G वो नहीं रिकवर कर पाएंगे, सबसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रेशर आया है इस मैच के, ओह माय गॉड, इतना करीब कोई आया है कभी क्या ट्रॉफी के? इतना करीब आकर छोड़ दे। आपको सिर्फ फरिया की साइड से आगे बढ़ना था। आपके सामने अरोरा है, आपको पता है वो लड़ रही है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। इतना लेफ्ट साइड देखें, अगर आप वेस्टर्न साइड देखें, लेफ्ट साइड देखें, जहां से आई है ये टीम S2G, वो पूरी खाली है, वो पूरी खाली है। वहां से जा सकते हैं फरिया के पास। सबसे ज्यादा प्ले एरिया यहाँ पे गेम बदली है सर। गाड़ी के नीचे वाला एरिया देखिए, वो गाड़ी के नीचे वाला एरिया देखिए, दोनों टीम खाली है। एग्जैक्टली, दोनों टीमें डिसएडवांटेज पर थी, विटालिटी और अरोरा। जी हाँ, अभी जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर खवातीनो हजरात। 4 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। लगा नहीं था कि शायद ये मैच अपने पार तकमील को पहुंचेगा, लेकिन S2G विल इट बी वंस अगेन फॉर देम? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार गाइस तो आ करो यार, अगर अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई। 40 तो बाहर हो गई अब भाई, निकालेगा 25-25 किल जिगर। नहीं ना, चुप कर जाओ बस। Imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, खुशामदीद करेंगे फिर से सभी लोगों को। और अभी मैं हूं अकेला, मेरे साथ पोर्टल भी आ जाएंगे कुछ सेकंड्स के अंदर। वैसे यही इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसी तरह से सबको बुलाना चाहिए। और पोर्टल आ चुके हैं। पोर्टल वेलकम बैक, कैसे हैं आप? लास्ट मैच आपने देखा S2G उनकी तरफ तो फेंका गया यहाँ पर क्वालिफिकेशन कह रहा हूँ, जो ट्रॉफी है उसे हासिल करने का मौका फेंका गया उनकी जानिब से। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि टीम S2G इतना करीब जब वो आ चुके थे तो हमें लगा कि शायद वो जो पिछला मैच है निकाल ही लेगी टीम S2G, लेकिन S2G करीब आकर भी बड़ा दूर चले गई। और अब जो है वो खैर आपको ऐसा दिखाई देता है कि हमारे सामने जो आखिरी 2 मैचेस हैं यही फैसला करेंगे कि कौन विन करेगा इस PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप को। लेकिन ये फैन जोन गाइड है PUBG मोबाइल एक्स रूटो, आपको गिवअवेज दिखाई देते हैं। स्टील ब्रेन डॉट चैलेंज है वर्ल्ड ऑफ वंडर के अंडर, और PUBG मोबाइल एक्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कोलैबोरेशन है उसके साथ आप लोग भी आई थिंक महसूस हुए होंगे। सिनेमाज में रही है मूवी और आप में से काफ़ी सारी आई थिंक अक्सरियत जो है वो जाके देख चुकी होगी, नहीं देखी तो शायद वो अवाम है जो वर्ल्ड कप में बिजी थी। और राइटली सो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो हैं ही इतने इंटेंस कि आप नहीं मिस आउट करना चाहते इन मैचेस को। और हमारा अभी भी फिर से फोकस है उन मैचेस की तरफ ही जाएगा। जिस तरह से पिछले मैच की भी बात हो रही है
तो आई फील लाइक पिछले मैच में ठीक है S2G ने तो मौका मिस किया, बट उसका जो क्रेडिट है मोस्ट लाइकली आई थिंक आपको देना पड़ेगा टीम अरोरा गेमिंग को, जिन्होंने उतना ही ज़्यादा अच्छा खेला। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हम मैच रैंकिंग्स की, जहाँ पर हमें अरोरा गेमिंग 25 पॉइंट्स निकालती हुई नजर आती है। फरियाद 10 आता उनके पास भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमने S2G को देखा 10 ही पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन S2G इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। हेडफुट्स फेंके जाते हैं, हैंड फ्री फेंकी जाती है, बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे प्लेयर्स। इतना करीब आए ट्रॉफी के, उनको लगा कि बस यहाँ जीत ही जाएंगे, बट लॉस्ट का वो पहला नॉक खाना और उसके बाद बाकी टीम का फॉलोअप में गिर जाना, अनफॉर्चुनेटली ये अच्छा नहीं था। बट कामिका से बचे ज़रूर थे, ज़्यादा कुछ वो भी नहीं कर पाते उस मोमेंट के ऊपर। उनको लगा ज़रूर कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ, कोशिश भी की, गिली सूट भी था, लेकिन अरोरा वो कुछ ज़्यादा ही लीथल होती हुई दिखाई दी इस पॉइंट पोर्टल। यकीनन आई थिंक अरोरा गेमिंग इनका इनफैक्ट मैं देख रहा था कि टॉप डॉक वो वाइटैलिटी को टेक डाउन कर रहे थे और बैक एंड साइड पर रीफस और ज़ियोल, ये जो 2 प्लेयर हैं वो लाइक टीम S2G के साथ फाइट कर रहे थे। तो ये जो टॉप और डॉक ने किया है, ओवरऑल टीम अरोरा गेमिंग ने किया है, प्रॉबेबली दे आर द ओनली वन इन दिस लॉबी जो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इस तरह के क्रूशल मैच के अंदर भी ये टीम जो है आपको रिस्क लेते हुए दिखाई दे और अपने जोरे बाजू अपनी गन पार पे रिलाई करते हुए वो दोनों ही को इस मैच से एलिमिनेट करे। तो अरोरा गेमिंग उन्होंने पिछला मैच जो बहुत बेहतरीन खेला, उस मैच के बाद नंबर 2 पर आ चुके हैं। एक टाई है जो कि टीम नोंगशिम रेड फोर्स के साथ इनका बन चुका है। कोई भी चिकन डिनर करेगा चैंपियन बन जाएगा, चाहे वो टीम नोंगशिम है, चाहे वो अरोरा है, चाहे वो S2G है और चाहे फिर वो टीम ई अरीना है। जब दिन का आगाज़ था ई अरीना वॉज #1 और जब दिन का हमने पहला मैच देखा नोंगशिम आई नंबर 1 पे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ई अरीना जो है वो नीचे जाती जा रही है और नीचे वाली जो टीम्स हैं वो ऊपर आती चली जा रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें अदला बदली होते हुए नज़र तो आती है, लेकिन ये अरीना अभी भी मौका है। विद 1 चिकन डिनर बड़े आराम से ये टीम जीत सकती है। बट देन फोर्थ राइव्स की बात कर लें, फिर से वही टीम वही बात कि एक ही टीम ऐसी है जिसने चिकन डिनर नहीं निकाला, एक ही टीम ऐसी है जो कि सबसे कम प्लेसन पॉइंट्स के साथ यहाँ मौजूद है। ऑल्दो इनके मुकाबले में त्यांबा भी वैसा ही खेल रहे हैं, लेकिन चले फोर्थ राइव्स वक्त हुआ चाहता है चिकन डिनर निकालने का। 2 बैक टू बैक चिकन्स निकाल कर तारीख रकम की जा सकती है, लेकिन चले ये तो अच्छी बात है। स्मैश रूल का यही फायदा है कि वो टीम जो #5 पर है #6 पर है, आखिरी 2 मैचों में 2 चिकन्स निकाले हैं आप जीत गए। द होल लॉबी विल बी सरप्राइज कि हुआ क्या है। आई थिंक ये बड़ा वैसे डिजास्टर होगा बाकी टीम्स के लिए अगर ये ऐसा हो जाता है, एंड वी रियली होप कि ऐसा हो, क्योंकि स्मैश पॉइंट आपके पास एक समझ लें कि चोर दरवाजे की चाबी है और आप वो ट्रॉफी है उस तक पहुंच सकते हैं अगर आपने इसको एक्टिवेट कर दिया। लेकिन जो हमारा पेज 2 की बात की जाए तो टीम फ्लैश अभी भी थोड़ा नीचे 97 पॉइंट्स पर है, लेकिन बहुत पीछे नहीं है 97 पॉइंट्स। उसके बाद आई थिंक पेज 1 पे आपने देखा 104 या 107 तक जो है आपको टीम फोर्थ हाउस के प्लेस भी दिखाई दे रहे हैं। देन टीम उल्फ ई-स्पोर्ट्स वो भी खासा करीब है, लेकिन डिफरेंस जब बनता है वो आता है टीम होरा ई-स्पोर्ट्स और टीम गॉडल के दरमियान, जहाँ 17 पॉइंट्स का फर्क फिर आ जाता है। 17 पॉइंट्स के डिफरेंस के बाद आपको फिर नीचे जो टीम्स हैं और थोड़ा पीछे दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी इस ओवरऑल स्टैंडिंग को जब आप देखते हैं, एक चीज़ ज़रूर आप देख सकते हैं कि हमारा अभी तक का जो कंपटीशन है, ये जो वर्ल्ड कप है, जो पिछला वर्ल्ड कप है, आप इसको कंपेयर करें उसके साथ, तो दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट कंपेटिटिव ग्रैंड फाइनल जो कि शायद आपने विटनेस किया है PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप के अंदर। और लास्ट टाइम इनफैक्ट हमारे पास जो आखिरी टीम थी जो टेबल के बिल्कुल बॉटम पर थी, उनके पास 54 समथिंग पॉइंट्स थे, और जब आप इस दफ़ा की लॉबी को देखते हैं तो ऑलरेडी आपको 58 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं एक टीम के और 2 मैचेस बाकी हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड कंपटीशन नहीं है। और लास्ट टाइम इवन जब पॉइंट्स हमारा जो स्मैश रूल है वो इन प्ले था, तो उसको अचीव करने वाली सिर्फ 3 टीमें थी, सिर्फ 3 टीमें थी। आखिरी मैच तक बात गई थी, आखिरी मैच में भी एक टीम ने स्मैश पॉइंट एक्टिवेट किया था, लेकिन आप हिसाब लगाएं कि यहाँ पर हमारे आज के 4 मैचेस के बाद ऑलरेडी 4 टीमें हैं जो स्मैश रूल के साथ बैठी हुई हैं। वेल अरोरा अपने आप को बहुत करीब देख रही है स्टेट इवेंट के ट्रॉफी के, बिकॉज अगर देखा जाए हम टूर्नामेंट के स्टार्ट में ये बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस स्टेट ट्रॉफी की वो अरोरा को है। S2G इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो ग्लोबल चैम्पियनशिप का टाइटल। इनके मुकाबले में भी कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको हमने देखा इससे पहले स्टेट इवेंट्स के अंदर डोमिनेट करते हुए। फोर्थ राइव्स उनके पास ग्लोबल ओपन का टाइटल है, लेकिन अरोरा जितनी ज़बरदस्ती टीम है उतना ही दूर हमें नज़र आती है हमेशा टाइटल से। #3 #2 #4 इन्हीं नंबर्स पे हमने इनको आते हुए देखा, लेकिन क्या इस बार
अरोरा वो ख्वाब जो उन्होंने देख रखा है पिछले 3-4 सालों से, उसको यकीन में तब्दील कर पाएंगे? क्या हकीकत बनाया जाएगा? जानने के लिए जाएंगे सीधा हमारे अगले मैच की जानिब। ख़वातीनो हज़रात, दिल की धड़कनें थाम लीजिए, मिरामर का मैच अपना आगाज़ लेकर जाने वाला है। लीग स्टेज की बात करें, फोर्थ राइव्स के मिरामर के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉइंट से सबसे ज़्यादा अच्छी एवरेज रही उनकी, लेकिन अभी लेट्स सी क्या होता है। फोर्थ राइव्स उनके मिरामार्स अच्छे नहीं जा रहे। आज के दिन इन 2 मिरामार के मैचेस के ऊपर अच्छा खेलना पड़ेगा अगर आना है टॉप 3 के अंदर, अगर फिनिश करना है सेकंड स्पॉट पर, थर्ड स्पॉट पर। इन दोनों मैचेस में डोमिनेशन ज़रूरी है। बहुत मौके मिले, बहुत मौके गवाए, बहुत गलतियां की, जोन शिफ्ट्स आए तब भी जोन नहीं साथ दे रहा। तब भी हर सिचुएशन में आपको टेस्ट किया गया है, लेकिन अब ये आखिरी 2 मैचेस जिनमें आपने अपने इम्तिहान को सही तरीके से निभाना है, जस्टिफाई करना है कि आप यहाँ आए तो आए क्यों। एक चिकन डिनर तो मैं देखना चाहता हूँ फोर्थ राइव्स का, उसके बगैर तो मैं कहूँगा कि मेरा दिल नहीं मुतमईन हुआ कंपटीशन से। इनफैक्ट सभी देखना चाह रहे हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं चिकन डिनर का, और आना चाहिए, बनता भी है। जिस तरह से एफर्ट किया गया है टीम के एंड से एट टाइम्स, बस आज का जो दिन है वो आप कह लें कि उस तरह से एक अच्छा स्टार्ट के तौर पर हमें नहीं नज़र आया। और फर्स्ट मैच वाज द मैच जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने तवक्को रखी कि शायद जो दूसरा ही मैच है उसमें आपको स्मैश पॉइंट्स है वो अचीव होते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन अगर ज़्यादा भी चले दूर जाना पड़ता है तो थर्ड मैच तक बात बन जाएगी, लेकिन दूसरा भी, तीसरा भी, और उसके बाद जो पिछला मैच हमने देखा, हालांकि जिस तरह का सर्कल था, डिसआर्ट हुए हम लोग। ज़ाहिर टीम हमसे ज़्यादा डिसआर्ट हुई कि उन्होंने वो जो एक पॉइंट्स थे, वो जो नंबर था, हासिल नहीं कर पाए वो लोग जो इस कंपटीशन में अलाइव रहने के लिए, जो इस ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन प्लेयर्स रेडी हो चुके हैं। मैच हमारा लाइव होगा, किसी भी लम्हे आपको प्लेन पात आता हुआ दिखाई देगा। लेट्स वेट फॉर इट कि हमारा मिरामार का मैच हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। आज के दिन का हमारा पहला और ओवरऑल पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप ग्रैंड फाइनल्स का ये 5वां मिरामार का मैच है। जिस तरह से हमने हिस्ट्री की बात भी की, तो 4 मिरामार के मैच जो टीम्स खेल चुकी हैं, इस मिरामार के मैच में 4 टीमों के पास मौका कि वो इस एक ही मैच को विन करें, अपने लिए ट्रॉफी अपने नाम कर लें, या फिर वो जो बाकी टीम्स हैं, वो जो 12 नाम है उनमें से कोई एक नाम से कंसिडर करे और फिर से हमें एक और मैच तक जो है वो इंतजार करना पड़े कि कौन चैंपियन बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने पोर्टल, लेकिन बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे टीमों के डिस्पोजिशन की। अर्ली ऑन ड्रॉप फाइट होती भी दिखाई दे सकती है। शायद कोई टीम किसी दूसरी टीम को चैलेंज करने के लिए आगे आए। नॉन्गशिम रेड फोर्स, उनको देखा जाए वो हमेशा से इसी साइड पर उतरना पसंद करते हैं और ESPORTS उनके आउटस्कर्ट में उतरना चाहती है, लेकिन क्या हो रहा, लाखों ब्रेडिया को छोड़ के, बटरफ्लीज को छोड़कर नॉन्गशिम रेड फोर्स के साथ उतरना चाह रही है। क्या वो उनसे फाइट लेना चाहेंगे? क्या S2G को चैलेंज किया जाएगा, ड्रॉप फाइट ली जाएगी? क्या होगा क्या नहीं होगा जानना ज़रूरी तो है, लेकिन चंद ही सेकंड्स में सर्कल भी बन जाएगा। एंड पोर्टल, मुझे लग रहा है कि ये सर्कल मोनते नहीं वो लाड्रेलिया इस साइड पर जाने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। लेट्स सी सर्कल, अभी के लिए हमारे पास एक सवाल ज़रूर है, इसका जवाब भी हमें चाहिए और नजरें हैं सर्कल पर, लेकिन सर्कल बनेगा। और क्रूजल वैली, वो जो आपको टॉप साइड है वहाँ पर सर्कल जाता हुआ दिखाई देता है। सेंडर डेल पेट्रॉन है सर्कल के अंदर, ला बेंडता है, और लॉस्टियंस बिल्कुल जो है वो कॉर्नर्ड है। लेकिन सर्कल के अतबार से अगर हम टीम्स की बात करें, फोर्थ राइव्स हो जाएंगे पिकाडो, वहाँ पर प्लेयर्स की व्हीकल्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं अर्ली ऑन। लेकिन जहाँ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, टॉप प्लेयर्स आपके सामने ऑन द स्क्रीन है। स्कारफेस हैं, QWZ हैं, TZ हैं, 27 एलिमिनेशंस इन टोटल इन प्लेयर्स की तरफ से कंफर्म किए गए। और ये एक चीज़ भी है कि जहाँ हम बात करें हमारे ओवरऑल कंपटीशन की, कि एक चैंपियन बनकर निकलेगा। वी ऑल नो कि एक MVP प्लेयर भी है जो आपको इस टूर्नामेंट का, S टियर के टूर्नामेंट का इनफैक्ट जो MVP टाइटल है अपने नाम के साथ अपनी अचीवमेंट्स में जो है ऐड ऑन करता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले आई थिंक हम टॉप को देखते आए हैं, हमने और भी प्लेयर्स को देखा है डिफरेंट टीम से कि वो अपना जो नाम है तारीख में रकम करते रहे। अगर PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप की आप बात करते हैं तो खैर मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड कप इससे पहले हमारे पास कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं वो हमें दिखाई दिए, बिकॉज शायद मैंने लिख रखा था ये। जी हाँ, FMVP 2024 रिजेक्ट के रिजी बने थे 2024 में, और 2025 में अल्फा गेमिंग के डॉक ने टाइटल नाम किया था अपने। बिल्कुल ठीक है आपने, उस टाइटल की भी जंग है, उस पहले पायदान की भी जंग है। लेकिन चलें, S2G के प्लेयर्स हमारे सामने हैं, फिर से दोहराया चाहे लास्ट मैच में जो उन्होंने किया उससे अनफॉर्चुनेटली रिकवर करना पड़ेगा। हो नहीं पाएंगे लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि S2G इतना करीब आ चुके थे, पोर्टल इतना करीब आ चुके थे। एक गलत डिसीजन मेकिंग, एक गलत फैसला इनको
पूरी तरह से पिछाड़ देता है। बट हाँ, थोड़े बहुत एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले तो सही, लेकिन इस सब के बावजूद अरोरा एंड नॉन्गशम रेड फोर्स का उनके करीब रहना खटकेगा तो सही। 139 पॉइंट्स पर आपको दिखाई देती है S2G, 140 पॉइंट्स पर आपको अरोरा एंड नॉन्गशम रेड फोर्स दिखाई दे रही है। नीचे देखा जाए ये अरीना थोड़ा दूर तो है, लेकिन इस मैच में कवर अप किया जा सकता है उस लीड को। 4th राइव्स एक बड़ा मौका है, चिकन डिनर निकालें, हैश 4 पर आएँ, फिर चिकन निकालें और उनकी तरफ से जंप किया जा सकता है। लेकिन गॉडल वर्सेस ओजी फिर से होता है। गॉडल पहला एलिमिनेशन पॉइंट निकालती हुई दिखाई देती है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि दोनों एक ही रीजन से आई हुई टीम इस तरह से लड़ेंगी, लेकिन हमने कई बार इनको देखा है आमने सामने आते हुए, और कई बार ऐसा हुआ कि गॉडल ने ही ओजी को एलिमिनेट किया। बिल्कुल, और इस मौके पर भी गॉडल उन्होंने आगाज़ किया इस मैच में। शायद इससे जो सेकंड लास्ट आई थिंक हमारा जो एरेंगल का मैच था उसमें प्रोबेबली ये फाइट हुई थी, और शायद इनका जो आगाज़ है एरेंगल का जो पहला मैच है आई रिमेंबर उसमें भी हमने ये फाइट देखी है। तो वाकई वक्तन फ़वक्तन ये फ़ाइट होती रही है, चाहे वो अर्ली ऑन आप बात कर लें, चाहे एट टाइम्स कुछ अच्छा वक्त के बाद की बात की जहाँ पे छोटी मोटी रोटेशन टीम कर रही होती हैं और तब आपको जो फाइट से बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन ऑल आइज ऑन टीम अरोरा गेमिंग। ऑब्वियसली अरोरा गेमिंग उन्होंने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला है, 25 पॉइंट्स निकाले हैं, और आज के दिन का इनका सबसे बड़ा ये मैच था। जिस तरह से हम इनको जानते हैं कि ये वो टीम है जो किसी को भी सरप्राइज़ कर सकती है। इनफैक्ट इनका ना परफॉर्म करना सरप्राइज़ होता है, इनका परफॉर्म करना बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होता, और यही चीज़ है पिछले मैच में आपको दिखाई दी। लेकिन जैसे ये आए इस दौड़ में अब टीम नॉन्गशम रेड फोर्स को फिक्र पड़ चुकी है। अब टीम S2G जैसे उन्होंने ज्वाइन किया इस कंपटीशन को, अरोरा गेमिंग जो उनको भी पता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, इनफैक्ट हम लोग वो 2 या 3 नाम नहीं है, तो ये जो नंबर है बढ़ता चला जा रहा है, और इस पूल में से हर किसी को सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी चाहिए। बट एक नाम आई थिंक जो ऑन द स्क्रीन है हमारे सामने, बहुत डिसहार्ट होंगे टीम निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स, जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी आई है ग्रैंड फाइनल्स के अंदर लेटली, क्योंकि जब दिन का आगाज़ हुआ था ग्रैंड फाइनल्स के Day 1 का खास तौर पे आगाज़ हुआ था, तो निग्मा गैलेक्सी ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। पहले मैच का विनर चिकन डिनर वो अरोरा गेमिंग के साथ फाइट, और उस फाइट में बहुत अच्छे तरीके से 4v4 प्रॉपर फाइट में डोमिनेट करके जाना, उस फाइट को अच्छे तरीके से एंड करना, और इवन 4 मैचेस खेलकर जब हमारा ओवरऑल स्टैंडिंग भी बनी थी फोर्स की, तो आई बिलीव टॉप 3 में थी। बासानी टीम टॉप 3 में थी, त्यांबा के बाद इन्हीं का नाम था ई अरीना के साथ। लेकिन जब हम Day 2 पर गए तो निग्मा गैलेक्सी बहुत ख़राब खेली। उनके जो आखिरी 6 मैचेस थे कल के दिन के, उसमें 28 पॉइंट्स निकाले टीम ने, इवन 7 भी कर लें तब भी 30 पॉइंट्स बनते हैं। तो वो जो सिर्फ दिन का पहला मैच था कल के दिन का, सिर्फ उसमें 15 हैं, बाकी सब में उनके ख़राब पॉइंट्स हैं। तो ये जो निग्मा गैलेक्सी ने किया है, और आई थिंक निग्मा गैलेक्सी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपसेट होगी अपनी इस ख़राब परफॉर्मेंस से। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने। निग्मा गैलेक्सी अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस है वो हमें नीचे से नीचे ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो पॉइंट्स की इतनी अच्छी होगी नहीं, लेकिन उल्फ को देखा जाए इनके सामने आएंगे 4th राइज के प्लेयर्स। ज़ैफा गाड़ी रोक दी जाती है, फाइटिंग इंटेंट शो किया जाएगा उस ज़ैफा की जानिब से। ध्यान देना है, पीछे हिल पे कोई प्लेयर आया तो आपको एक्सपोज कर सकता है। 4th राइज उनके प्लेयर्स रिग्रुप करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ फलक को पड़ेंगे वो बुलेट्स, लेकिन काफी लो HP किया जाएगा स्कारफेस को। एक और गोली लगती तो शायद स्कारफेस यकीनी तौर पर स्कारफेस नॉकआउट हो सकते थे, लेकिन ज़ैफा गाड़ी लेकर फॉल बैक किया जाएगा। ऑल्दो फलक उन्हें हेडशॉट कनेक्ट होता तो शायद वो भी नॉक हो सकते थे। दोनों साइड के ऊपर होती, लेकिन pretty sure he drops off the vehicle, he gets insta flushed, so that does keep I mean, इन्होंने इसके ऊपर push ही नहीं which किया, they need because they're right on 105 points. Get themselves 17 more on this match. They set themselves above that smash ruling. Challenge out for that top 3 as well if we do go all the way to 6 matches, which at internationals does tend to be the way things go down. Yeah. Scarface. Tight timing on the turnaround here. Being ran down by 4th Rives. He's calling for the backup and they're starting to swell over. Ooh, so close. How is he alive? I don't know. He's tucked in, finally found by Falak. This is just as the rest of the party as well. Now, they've got a read on this, they know. Instantly peppering the bullets back, and there's no reason to be here anymore. Call it quits. It's so central. It's not a bad place to play, but I think you're right. Ulf just realizes that going to cut their losses on this one. This stage of the game, trying to get yourself further up in the rankings, not worth it. Take the fight against a team which might be elongated with the nades, been thrown through the windows, playing off the upstairs, can get very dangerous in there. Dropping those mollies as well.
Zone 2 though coming up, and Zone 2 will cut in very hard on Miramar. Plenty of fun areas. This could head over towards on some hard shifts, can head over towards the high ground. Now that's a highway over towards those fielded areas on the north side. Rivtora Amada, Cruz de Valle, water treatment also in place, so a lot of elevation, as well as very, very shallow spots off the map. So a bit of fun here to work with going forward. Loot crate does drop down. This is very good for Nongshim Red Force as well, because as they've noticed with this circle going over towards the north side, they can cut in across Oasis. Aurora खुद देख कितना side खेल रही है. Enigma Galaxy will be the first team to grab this spot though, coming in from El Pozo. But yeah, I think that Nongshim Red Force cuts out the majority of the queue on this. For Nongshim, they've had a pretty firm grasp on these games, but there's been some awkward decisions again, mirroring the sentiments we've given out here about some of these sides struggling a little bit when the pressure starting to get to them, eating away at them with the decision making. This does feel slow as well, Jackie, for Nongshim, because I think they stopped off almost in Oasis. Had to think about what their next move was going to be, and they're still just making it across. It is rocky ground though, so they're slowly finding their way in. But again, the more time they waste on this rotate, the more teams are going to make those wide routes. Furia being one of them. They're actually going to meet them on the roadside probably quite soon. And Furia has not been traveling through the blue. Right now, the rest of Nongshim Red Force are trying to keep themselves at a reasonable HP count. Getting very close now. Might just tuck in. You've got Ulf here as well. To post on their movement throughout this game. They ran into OG. Bit of damage done. I mean, two players already hard flushed out. One of them knocked up on the ridge side. It's Aru, the last remaining member. Throwing the nades down. That's nearly all of the offensive utility used as well. Just the Molotov. So broken bottles and his teammates gone as the fire spreads. Meanwhile, top side, what we touched on before, the Nongshim rundown with Furia still hightailing behind them. They actually get ahead of them on this as well. But Nongshim Red Force, they're kind of an unsuspected rotation. I think if Furia was keeping an eye on those drop spots, they should know that Nongshim drops towards ruins and likely has made a very northern rotate, but they're going to take a very, very quick move in. You can see here, Igor's playing bumper cars alongside with them are so easy, moves forward. The rest of the team hasn't quite regrouped yet, but they've